Hello guys, welcome back to another Genshin Impact की लाइव स्ट्रीम। आप सभी का स्वागत है। क्या बोलती मेरी बातचीत लिबलिबी पता नहीं कहाँ तो दिमाग में आ गया, बस यही बड़बड़ाते। गुड मॉर्निंग राजन, वेलकम टू द स्ट्रीम माय फ्रेंड। सुबह के बज गए 10:30। चल भाई आरजे वाली फीलिंग तो मुझे। गुड मॉर्निंग यूट्यूब। आज के हम जेंशिन इम्पैक्ट में करने वाले अपने नोवेलेट को 80 लेवल पे असेंड, जिससे कि उसका मैक्स लेवल कैप हो जाएगा 90। यानी कि 90 के आगे वो जा ही नहीं सकता, लेकिन हम उसको 90 लेके नहीं जाएंगे कि हम पे इतना मटेरियल नहीं है। ये गेम कैप्चर हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। कैंट हो गया, कांट डू ओबी। ओह हो गया, माय बैड ओबी है। डेंडर डैमेज बोनस वाला जो है इंस्ट्रक्टर टी कप चेंज कर देता हूँ। इवन दो उसमें 17% का क्रिट डैमेज था, तो काफ़ी अच्छा सेट था। मेरा 117 हो गया, बट तो डैमेज बोनस मुझे इंक्रीज पड़ेगा, इसलिए इंक्रीज होगा भी क्या भी। फिर से स्विच करके देखे कितना डिफरेंस। एक 56 का डेंडर डैमेज बोनस प्लस 135 का क्रिट डैमेज। गंदा गिर रहा है, काफ़ी गंदा गिर रहा है देखा जाए तो। बट वन 135 से 117 आ गया, नो प्रॉब्लम। इतना काम चला सकते हैं अभी हाल फिलहाल। इसे एनहांस कर लेता हूँ। मेरे पास ये है एचपी का, जो कि काम का नहीं है। लेवल अप कर। ओ ये बढ़िया था गुरु, कांडू एचपी में गोस टू 40% एंड ये वाला 34% था। तो डेंडर डैमेज बोनस हो गया 62। आई होप से थोड़ा सा डैमेज देगा या फिर उतना ही देगा, मुझे नहीं आइडिया। इतना तो चाहिए यार। डिप्लॉय हो ये टीम, अटक के रहे। तो मुझे चेक करना है इसका डैमेज। तो मारू मैं इसी को जाके मार। हेलो क्रेजी, वेलकम टू द स्ट्रीम माय फ्रेंड। देखिए जरा टीवी टीवी ना आ रही है कि नहीं। हाइपर ब्लूम नहीं खेलेगा, मैं खेलेगा ओनली आकर बैठ। चलो फिर मेरा प्लान चेंज, हाइपर ब्लूम जाएंगे। कल नया अबिस, ओ ये लग गए चेंज। ओ अब शायद पायरो बेस्ड होगा। ओह पायरो बेस्ड होगा तो फिर तो बहुत इजी हो जाएगा, मतलब एक तरह से देखा जाए तो। इजी नहीं, तू किधर जा रहा है खुद से? अबे चल तेरी भैंस। तो 20,000 का पड़ा ना, आई गेस। बच गया मैं तो। काट डालेगा मैं यहाँ से।
किस्मत खराब हुआ तो हाइड्रा बॉस। भाई किस्मत अब भी जैसे हाइड्रा बॉस गया है, ऐसा मत बोल। दो 2,000 का। नेवर माइंड दो। अबे मार ले भाई। कौन क्या कर रहा है? मैं वैलो खेल रहा हूँ। तेज तो है Genshin। नहीं तो सही। ये ला तेरी वैल। तो हीलर है। हीलर है, उससे क्या फर्क पड़ता है? वो अपना काम कर रही है बराबर। अभी फोटो नहीं खींचना बावड़े। अब होगा डैमेज में इंक्रीज। ये ला बैच की खत्म, साफ कर दो। की जरूरत नहीं है। नया वाला हाइड्रा बॉस पूरा हिट टैंक कर लेता है। अबे हाँ, ये जो नया आया फ्यूरिना वाला ना, या फिर वो तुम वेल की बात कर रहे हो? भाई वेल आ गया ना अब इसमें, दिमाग कसम से मैं भाई इनकी अम्मा बैंड पे आ जाऊंगा। आ देता हूँ अभी। सात बन रहे, 60 बन रहे हैं। इससे मिलेंगे समझ नहीं। मेरी बताओ को 2 बार करना क्या ई करना पड़ता है? अच्छा लाइक मेरे पास हो गए 3, 12 पे हो जाएंगे 4, यानी कि मुझे लगेंगे 6 और, यानी कि टोटल 18। मेरे पास अभी कमी है 7 की। क्या बात है, क्या मैथ्स लगाया मैंने। पढ़ कितने रहे मेरे पास अभी? तो जियो के निकालूंगा मैं। बचे 5। 5 कौन से बना सकता हूँ? मुझे निकाल लो क्या बनाऊंगा? ये हो गए 3 4 और बाकी हो गए 4। 4 दे दे तू मुझे डेंड्रो। बस ना काम बनता, भाड़ में जाए। 4 की 4 में कन्वर्ट करूंगा। कन्वर्ट हो जा। अच्छा 2 जियो पिछो छल हो गए 18 इजली। वक्त आ गया है गाइस, जिस पल का हमने दिल थाम कर इतना देर से इंतजार किया था। इतने सालों से हम के लिए कड़ी तपस्या कर, आज वो वक्त आ गया। ओ ये तैयार हो गाइस, ये होने वाला है असेंट। क्रिट डैमेज हो जाएगा 200%। ओम भगिनी मुखे ओम फट स्वाहा। Now that I have reclaimed one of the 7 authorities from the hands of the usurpers, I have regained my true form. ओ भाई साहब क्या लाइन बोली है। I have regained my true form। आग लगाएगा, आग लगाएगा, लगाएगा कि नहीं लोमड़ी?
आर्कॉन्स पसंद नहीं, जिस हिसाब से वो बोलता है वो तो दिखता है। नहीडा फ्यूरिना छोड़ के, नहीडा ने भी कुछ ऐसा गलत नहीं किया था, तो नहीडा का कुछ प्रॉब्लम नहीं है उसको। फ्यूरिना का तो मुझे बैक स्टोरी नहीं पल्ले पड़ा, मतलब मैंने खेली नहीं अब तक। और नहीडा का भी मतलब मैंने अब तक खेला तो नहीं है, बट मेरे को ऐसा सुनने में आया है जहाँ तक, नहीडा को तो खुद उनके लोगों ने पकड़ के रखा था ना। नहीडा से भी उसको एक तरह से कोई दिक्कत नहीं है वो। बट शोगन वगैरह का, शोगन ने वो जो क्या था, विजन हंट डिक्री किया था, शायद उसकी वजह से वो डिस्पाइस करता हो अपने कौन? ये नोवेलेट। देन मोरेक्स का तो जोंगली एकदम पसंद नहीं। हाँ जोंगली तो भाई मार मार के बैठा है बंदे, ऑब्वियस ही बात है, वो क्या ही पसंद है। ये ठहरा सज्जन घर का इंसान। ने बोली इतनी जगह मेरी, बाकी तुम आना मत मेरे पास बस। जोंगली यहाँ का करे तो ये तो बात सही बोली। मैं टेस्ट करना चाहूंगा मेरे नूबलेट। एक 200 क्रिट डैमेज 9% ही बढ़ा है वैसे तो डिफरेंस नहीं आया होगा। ये इस शील्डेड कैरेक्टर को कितना डैमेज दे? 2-2 हज़ार का है, 2-4 हज़ार का। Silence! Let's light it up! ओए नीचे आना कुत्ते। Settle down! Let the ये mighty हो गए be इसके humble. ड्रैगन फास्ट ड्रैकोनिक ग्लोरी फुल रेडी। कुछ सही है यार, फास्ट ड्रैकोनिक ग्लोरी से 14,000 का डैमेज दे रहा है। Bow your head. वैसे देखो 6-6 हज़ार का दे रहा था। I'm going in! Silence! सिर्फ और सिर्फ जेटी बोल। इसको स्ट्रिंग करते हैं, The Huh? tides beckon. इसके स्ट्रिंग करते हैं। कुछ पे स्ट्रीट। ये बॉस रिजली से आराम से मरता अगर बिल्ड हो। हाँ रिजली भी पायरो, ये क्रायो कैरेक्टर है ना, ये इलेक्ट्रिक है, वो ऑब्वियसली उसकी शील्ड वो आराम से तोड़ के फोड़ सकता है। क्या कह रहा है, ट्विच पे स्ट्रीम करते? ट्विच पे स्ट्रीम। ओ ट्विच की सुन रहा हूँ। कर ना, रोका किसने? मेरा रिजली बिल्ड ना हो रहा, कोई मेरा तो नोवलेट भी बिल्ड ना हो रहा। मिनिमम इसका 200 क्रेट डैमेज से ऊपर होना ही चाहिए, जबकि इसका मेन वेपन भी है मेरे पास।
वही तो बात है, आर्टिफैक्ट नहीं मिल रहे। जिए तो जिए कैसे बिना आर्टिफैक्ट के। कौन सा नशा करके आया नहीं, लगता है कोई सपना देख के आया। ये ट्विच पे स्ट्रीम करते ही मेगा स्टार। मेगा स्टार। फेमस फेमस फेमस, सब सब्सक्रिप्शन पे सब्सक्रिप्शन ले रहे, ले पैसे ही पैसे आ रहे। यही देख के आएगा सपना, नहीं। लगता है। थोड़ा सा आज वर्ल्ड क्वेस्ट या फिर मेन क्वेस्ट करेंगे, ताकि थोड़ा प्रीमोस वगैरह इकट्ठा करो का। 2-3 दिन से किए ही नहीं यार। वो घड़ी दूर नहीं जब शोगन मेरे सामने होगी, मैं शोगन के सामने होऊंगा, लेकिन हम दोनों के बीच में सिर्फ शोगन तुम्हें प्रीमो जेम्स और विशेष का फासला हो। वो फासला हमें मिटाना है। अलग फर्नीचर मटेरियल दे भाई दे। आए क्या देना मुझे? पाइनवुड, पाइनवुड लाना। ओए कौन से पेड़ से मिलता है पाइनवुड? लाख कोई फ्रूट का। अब बताओ ये कौन से ट्री से मिलता है पाइन वुड? क्या? पाइन द वुड क्या कौन से ट्री से मिलता? पता नहीं। ढूंढते हैं पाइनवुड, मेरे को जैसा पता रहेगा कौन सा ट्री। वृंदावन। Off we go. होताओ का एचपी वाला साइंस गलती से बंद कर दिया। वेरी डेंजरस। को फार्म करने में 3 मंथ्स लगा था, और 3 मंथ एक ही बार में बूम बाम डिम 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 डिम। Feeling sad for you with 69 others, crazy भाई। इस पे लाइव जाते कैसे हैं Off we Twitch go. पे? ठीक है तुम पहले पता करके आओ, फिर हम डिसाइड करेंगे कि स्ट्रीम करना है कि मोए मोए क्या बात। Off we go. Off we go. ऐसा काम ने चल रहा है। ट्विच पे इंडियन ऑडियंस कम है। हाँ वो तो है। यही कौन सी मिली जा रही है? फिर न्यूरो ट्रांसलेटर लगा के बैठेगा आज में, गूगल ट्रांसलेट। हाँ भाई इसने क्या लिखा, एड ले ट्रांसलेट करके। हाँ हाँ यस ब्रो यस। है ना न्यूरो?
adventure time. यहीं पे तेरे को कौन से बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर मिले जा रहे हैं? कितना टाइम हो गया है सब्सक्राइब चैनल चलाए हुए जा रहे हैं? चुई हाउड मिल रहा है, चुई हाउड। अला मुझे चाहिए कोई और वुड, ये दे रहा है कुछ वुड। ट्विच में उजांगस क्या बड़े बड़े है क्या? क्या है? बड़े बड़े तो ऐसे अच्छे लगते हैं। नो व्हाट आई मीन। Maybe you're. ओ टैंक ट्रस्ट रैंक 4 हो गया। तरबूज ये वहाँ बस। तरबूज तो हमको भी चाहिए लेकिन हम पे नहीं। तो किससे? खाने के लिए। तू नहीं खाता क्या तरबूज? खाता कहाँ नहीं? इंटरव्यू कोड पर फ्रेंड ऑफ द रेल्म। We have. 60 प्रीमोस मिल गए। और कितने लेवल पे वो देने लगता है? फ्रेजल रेजिन। कौन? ओ फेरेटिना पॉट। हेलो। पॉट बे पॉट। 8 लेवल पे, 8 लेवल पे डिफॉल्ट में। आगे बताना पड़ता है। If you ever. कंपेनियन चेंज कंपेनियन कैसे था मैं भूल गया। चालू यूरीना ऑलमोस्ट होने। बुलेट क्या डाल सकता हूँ मैं? न्यूरो क्या खेल रहा है? न्यूरो इज प्लेइंग विथ मार्बल्स। तुम्हें भी अपने मार्बल्स के साथ खेलना है। Hello there. I could hear you. Morning. Early ride. See. और कैसे बंदा हटाते थे? कौन बंदा? अल्ट दबा के रख, वहाँ पे वो देख, वो आ रही है ना। हैं? अल्ट दबा के रख। मैं डाल देता।
आउट एनिमल नहीं दिख बेटे बस 2 3 हेलो, बोल 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 आवाज आ रही है ना? नहीं आ रही है, क्या बात कर रहे हैं? बोल राजू इनपुट माइक्रो यूएसबी। हेलो, हेलो चिटी। हाँ हाँ हेलो, far from heal you my friend heal you क्या बता रहे हैं? welcome to the stream Good things come to those who don't wait around. That's what they say anyway. Knowing my luck, the opposite is probably true for me. Benny's यादू adventure team, assemble! नहीं ब्रो मैं तो गजनी हूँ हेलो, मुझे अभी कुछ समय पहले का चीज नहीं याद रहता मैं कल का चीज कैसे याद रखूंगा हाँ भाई, गजनी तो हो ही रहा है तू। है ना वही तो मैं भी कह रहा हूँ मैं तो गजनी हूँ वैसे तुम कल अपनी गर्लफ्रेंड का नंबर नहीं देखे गए बात तो करने चले गए Adventure यार time! क्या बात है तो हमारे स्ट्रीम पे रह लेते हम बात कर एक साथ दो काम हो जाते हैं ओबीएस पे स्ट्रीम मतलब ट्विच पे स्ट्रीम करने के लिए ट्विच का दूसरा ओबीएस है। ओहो फिर कर ले डाउनलोड कर तो लिया है। If you are you unable to find Twitch virtual camera trial, you may need to restart. अच्छा कैमरा भी लगेगा का स्ट्रीम करने के लिए? तो लोग बिना कैम हाँ मेरे को ये कैमरा हटाना है इस पे। क्या करना कैमरा पता नहीं क्यों आ रहा है। बहुत कीड़े काट रहे हैं मुझे ये वाला भी अपग्रेड कितना लेवल अप हुआ है एक ही बार में रिचार्ज और ईएम आया कुछ मिला इसमें ना डैमेज इसमें 13% का है रेट नहीं है ब्ला 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 यार ये कैमरा कैसे हटाऊंगा मैं इसमें से? ओ हट गया।
All webcam disable. Yeah. Roman Gaming, hi bro, welcome to the stream, my friend. Electro damage bonus, pyro damage bonus. मुझे crit damage वाला चाहिए, यही नहीं. वैलोरेंट खेलोगे? खेल लिया ब्रो मैंने काफी वैलोरेंट, अभी तो नहीं खेल. क्या हो यार, मैं वैलोरेंट कभी खेलते हैं. वेट अंटिल द फॉलोइंग डे. आए एक दिन और लगाओ क्या? अरे कल If you press a leaf between dry sheets आता of तो paper, फिर मैं मच्छी और पकड़ लेता. कल कहाँ पे? आया ही नहीं. तेरी मच्छी की माँ का भरोसा. जब तुझे मच्छी चाहिए थी तब बराबर वर्ल्ड में घुस घुस के पकड़ रहा था. तेरे को कितनी दिन कहा मैंने कि मच्छी पकड़नी है तो आ जा, तब नहीं घुस रहे हैं. तूने वर्ल्ड लेवल डिसेंड किया था क्या? कद्दू नहीं किया था. और एक बार सब मच्छी पकड़ने के बाद 3 दिन नहीं लगते, खुद बोल रहा था. कौन सा लेवल है? AR 54. अपने वर्ल्ड में मैंने पता है कितनी मच्छी पकड़ी. वो लंबी वाली 12 और 11 हो गई है. लाल वाली ओ 12 भाई. और दो वाली 11 प्लस उसका R5 करने वाला जो मच्छियां लगती है ना, रिफाइन करने वाली मच्छियां भी पकड़ी मैंने. 3 और 2 मोटी मोटी. प्लस मम्मी भी कह रही थी कल मच्छी खाएगा. फिर मच्छी की जगह पे कल चिकन खाया, मुर्गी. मस्त ऐसे तवे में फ्राई करके तेल में डाल के चीज वीज डाल के ऐसे जो चिकन बॉल्स बनाए थे मेरी घर पे. मजा नहीं आया, लेकिन वो जो आलू में मजा है वो चिकन में नहीं मजा आया. चिकन का टेस्ट ज्यादा ओवर पावर कर रहा था. वो टेस्ट बना ही नहीं. नचनी आ गई, नचनी आ गया, मिनियन जिन आ गई. मोमेंट पे अपनी लगवा ले. एंटरटेनर ऑफ द ईयर. न्यूरो, अगर तेरे को कोई एक कैरेक्टर फ्री मिले तो कौन सा लेगा? ऑप्शंस दू. हाँ. यूनजिन, देन लियू के कैरेक्टर में जितने भी है 4 स्टार. अच्छा 4 स्टार. देख के लूंगा इसे थोड़ा, मेरे को पता ही नहीं. जैसे यांगलिंग, देन वो तेरी बुक वाली वो बम गिराती है, लॉयर. वो तो है मेरे पास. वो भी मिल रही है ना, मैं बता रहा हूँ. फिर एक क्या? आई गेस गिटार वाली भी है. गिटार वाली यहाँ की कि सुमेरू की है? Go to the warehouse at the dock.
भाई इनका भरोसा नहीं, कब मारा पीटी शुरू। मैं हेल्थ और ड्रेन हूँ। Hey, who's that skulking around? क्या बात है राजन, बताओ क्या बात है, नहीं क्या बात है। क्या बना रहा है? क्वेस्ट कंप्लीटेड। क्या स्टेज मिला, पेयर और कार्ड स्टेज। ओए एक चाबी भी मिली। आ जाओ किसी को वैलो खेलना हो तो। ओ भाई किसको वैलो खेलना? राजन खिलवा रहा है। जाओ जाके खेलो वैलो, जाओ जाके वैलो खेलो और पेलो। Enemies. ये जो हाल है सवाल है, कमाल है जानना जान पत्ते मिलते मानना। काफी बूस्ट हो रहा है, 218 से 232% हो जाएगा। ये काफी अच्छा बूस्ट है मेरे हिसाब से, और मेरे पास है वो चीज़ है, एक और ये दो को बस कन्वर्ट करने वाली चीज़। 8 क्राउन भी है। एक ही है ड्रीम सॉल्वेंट, एक ही। ओ फाइनली फिशल भी हो गई लेवल 10 कंपेनियन। तो किसी ने प्रीमो जेम्स नहीं दिए मुझे। I created another. किसने प्रीमोजम नहीं दिए जीटी? 10 लेवल फ्रेंडशिप होने अब मिले आएगा तो। चल जेटी मैं जा रहा टू पे स्ट्रीम करने। तू जा कहाँ रहा है? हैं? जा कहाँ रहा है? नया अकाउंट बना के खेलूंगा ना, इसमें कुछ बचा ही नहीं जाता कुछ करने को। और क्या? बना बना बना।
और नया अकाउंट बनाने के लिए देखो भाई राजा की अपनी आईडी कर लो हैक। निकाल लो प्रीमो, हैक करके सारे प्रीमो यूज कर डालो जितने भी हैं उसके अकाउंट में। हेलो की आईडी दी लोमड़ी के। और विश करो साइनो पे। बकवास है C1 C1 नहीं C0 तो एक नंबर का घोड़ा है, क्योंकि उसकी अल्टीमेट ही उसकी पावरफुल है, बाकी अटैक तो घटिया है उसका। पता है तेरे को जीटी चीज? क्या मैंने तो चलाया ही नहीं लगता। तूने चलाया ही कहाँ है? लोमड़ी। तूने तो ट्रेनिंग सेक्शन में चलाया उसे, उसकी तो अल्टीमेट वहाँ यूं चार्ज हो जाती है। ऐसे बाहर बिना अल्टीमेट के उसका डैमेज देखा है वेपन का? 200 मारता है बता कहीं का, चार्ज होने में घंटों लगाता है अल्टीमेट। तूने साइनो का टास्क किया है स्टोरी? ये तो मेरी स्टोरी काफी बची। अभी तो जीटी जवान जाने मन हसीन दिलरुबा। कैसा रहता है इसके आगे? चमन जाने मन अटन दिल रुबा, है ना? नहीं बात। मैंने तो दिल दबा इशार हो गया, ये कैसे कब हुआ न जानू मैं न जानू। ओया मिसा तो आया तो या का मिसा तो चिंग चिंग चिंग। कल हो जाएगी शॉप रीसेट, मिलेंगे हाँ? विश। ओ कल क्या आज भाई, शाम को हो जाएगी। यानी आज विश करने का टाइम आ रहा है। फिर हो जाएगी अबिस भी रीसेट। एबेस रीसेट हो जाएगी, यानी कितने प्रीमो जाएंगे? 450। 450। शोगन आने तक 2 बार एबेस रीसेट होगी। ये एक हो तो अरे गए। Those two डेली look चेक इन familiar. नहीं किया यार मैंने, It's Ippei and Shinojo. मैं तो भूल ही गया था। Guess they must. Anyway, let's go say hi. Hi, फिर Ippei. न्यूरो वीडियो Hi, डालेगा Oh, अपनी it's ट्विच की you. स्टोरी कट I कर। was just ordering some. You know these two? Yes, they helped me and Master. What about you? How do you know? Also a chance encounter. So we all know each other. Not exact. Somehow we ended up on the topic. It's probably. Oh, yeah. That's old news, इस though. अकाउंट में We ज्यादा have वैसे reason कुछ to बचा तो suspect है that they'll- नहीं Wow, करने that's को। great. Of course, this is Correct. just तुझे personal. दूसरा I अकाउंट was तब बनाना चाहिए था instructed जब to put नोवेलेटर their होता हो, both बैनर पे prepared. थे। Lady Hiragi has. आराम से एक बंदा What's wrong? तेरा कैरेक्टर Oh, पूरी don't टीम mind कैरी me, करने वाला हो right? जाता। I think so. शोगन के लिए but सेव we कर लूंगा shouldn't- दूसरे Now, अकाउंट if पे, they क्या sent दिक्कत me है? out. Shinoju doesn't look like he's taking this. Sorry, I'm ashamed to be so. Are you worried about their? Not अब exactly. राजिन स्ट्रीम कर I सकता get है what तो you मैं भी mean. I आके really do. स्ट्रीम करने की We- ट्राई What should we कर do? सकता हूँ। I don't know. That seems a bit rude. Right. If I up, I don't think it's. it's fine. I see. Let's go to the commies. The Firmiana Leaf. Firmiana Leaf. This place impresses me. We'll just wait here. Ayaka wouldn't mind. Honestly, even if we did come. All right then. We will. That tingle. अच्छी। Another test subject. Another test subject. Oma. Without looking at the board, you've ruined my strategy in one move. Amazing.
Now what should I do next? Ayaka, Toma, it's us! Huh? Hey guys, it's been a while. If you're looking for my lady, I'm afraid she's not here right now. Oh, that voice. यार Toma, इस would that चूतिए happen को to be the follow traveler? करना तो मैं सोच Yes. Greetings, कभी-कभी traveler. बहुत ही बकवास चीजें ये Ayaka रहता speaks of you constantly. Finally, today is the day. I am head of the Kamisato clan है। and आर्टिफैक्ट Yashiro देके गया Commission. है 2 लेवल का। Kamisato क्या Ayato. करूंगा मैं उसका? कामिसातो आया तो से भाई फाइनली मुलाकात तो हुई। ओ भाई गरम गरम चाय हाथ में ही देगा अभी। Greetings, both. I have long उसने been तेरे लिए indebted to you डांस on my किया कि sister's नहीं अभी behalf. तक? Finally, डांस हो I have the chance to express my profoundest कुछ भी नहीं gratitude किया। to you आया in तो person. डांस नहीं करता लोगों ने। Ayaka is out today. अच्छा आया You are तो here मैं regarding सोचा आया anything की related बात to the कर रहा है। Kamisato clan. वो You करेगा are तो quite मुझे welcome to इंटरेस्ट नहीं discuss है it with देखने me में। instead. Oh, भाई वो हैरी का फेवरेट hi. कैरेक्टर है क्या Your बात कर रहा है flattering भाई? words flatter us. Please excuse this. उसकी पर्सनालिटी के हिसाब से होना चाहिए भाई, वो है वो अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से काम भी करता है। Proper etiquette. हैं? Why? Well, he seems like a pretty. लेकिन फिर बीच में आ जाता है The नोलेट। whole atmosphere in the room Ha, ha, changes. ha, It feels like ha. you gotta be super polite. पानी डाल के आग लगा देता है। You shower me with praise undeserved, my little guest. There is no need to be quite so formal. This is a private residence, so please, relax. Oh, good. Because that whole spiel was really tiring just now. Alright, now that that's over, Paimon's just gonna ask the question. We heard a rumor that Kujo Kami. केटी का पहला 5 स्टार कैरेक्टर I था wouldn't have thought. नोएलेट। I see. The head clans of 2 commissions, since Oh, the no, Yashiro no. Commission preside. Yes. क्योंकि उसने And- नोएलेट नहीं Right, था। makes sense. Yeah? Too It is. All right then. I'll be sure to pay them a भाई मैंने तो येलन निकाली No थी। need. I'll. Huh? कोशिश तो मैंने भी This करी is थी a लेकिन marriage निकली नहीं। between the Kujo clan and the Hiragi clan. The work of the Yashiro Commission, but she किस is पे येलन presently पे तूने कहाँ occupied ट्राई with किया other. था? Oh, and would you two care to join me? I presume you two तब तक have तो a खेल भी special. नहीं This रहा था, being ये the येलन case, आई थी। why not come and. ओए लोमड़ी के येलन के साथ वो भी था जोंगली। This one time, that's all. येलन के साथ कहाँ जोंगली था? Oh, wait. चुमटे है गया। तो कौन था? Alright then. उसके साथ तो I वो cannot चाइल्ड thank you enough. Wait. येलन के साथ कौन था? Small येलन के साथ Toma, था वो I'm heading out with my 2 लिनी। guests. Not a problem. तब तूने खेलना शुरू किया जब लिनी आया है। और नहीं तो क्या? ये तो मेरे पे ऐसी फ्री में है क्या लिनेट? हाँ लेनेट तो यार हाँ उसे है। मैं गायब हो गया था फिर। पता नहीं क्या अच्छा होगा। तो बैनर येलन का तो मेरे सामने था, हटा था मेरा। Ah, you're finally. Oh, yeah. Friends of ours. यार 160 पूरा पूरा रेजिन है मेरे पास। चलो फिर पहले बॉस ही मार लेता हूँ जाके। So it's true. आजा ये आर्टिफैक्ट। Well, अरे हाँ यार there we have it. कल मैंने कुछ Great, किया so our ही hunch was- नहीं। It is a little resin का। inappropriate. Don't worry, sir. That puts my mind at ease. कल सिर्फ Now, of course 40 not. रेजिन यूज I करके guess मैंने यूज this भी is- नहीं किया भाई, तभी तो पूरा फुल है। शाबाश लौंडे। रात को लॉगिन करके खेल लेना चाहिए था यार। रात को ही फुल हो गया होगा 8 बजे के आसपास, क्योंकि सुबह ही खेला था और फिर सारा दिन खेला ही कहाँ मैंने, रेजिन से कुछ किया ही नहीं। मेरा रेजन फुल नहीं होता था। All right then. Okay. Thanks, Ipe. I apologize that your impromptu visit comes at... I don't mean to impose. I heard the good news about yourself and Lady Hiragi.
I'm truly honored. Electric We escape. came to congratulate you as well. Since the achievement incident with मिल the गई मेरे को। Takatsuka, I'm still acclimating to the position of पता नहीं acting इससे head of. क्या You're होता- far too क्या है modest. I'm electric flattered, but पता है मेरे को Well, you're 5 Robot star Gaming, bye bro. Department. Bye bye. come देखो on now. शुरुआत की स्ट्रीम तो ऐसे ही जाती है। Pardon me. It's perfectly Chala all right. आता It's a काफी। joyous occasion. Lighthearted is अरे मैं ऐसे exactly ही how स्ट्रीम you're करते right. करते थोड़ा सा आंख I'm लग जाती है curious to उसके know. बाद भाई ये Of उठने के no साथ doubt बसड़ people चालू will हो। offer you. Indeed, I am. So please be confident. Nevertheless, there is. Please go ahead. You've been working hard to bring. If you choose now, of all. Yeah. Couldn't have put it better myself, Sir Hiragi Shinsuke is firmly. So although now may not look like. Oh, that guy? I can see where you're coming from. Yes, I'm well aware of. Well, sort of. It's funny actually. Huh? Really? अभी तो She didn't मैं- say. Oh, उस वाले का Anyway, level up as कर her रहा boyfriend, हूँ, I'm after making सुमेरु some वाले का statue disgruntled 7 noises. okay. किसका? So you discuss. We did. सुमेरु वाले you statue know what? 7 का क्योंकि I मेरे think it was about no matter what happens 3 next. हो चुके ना Give me a break. Sorry, but Paimon's been wanting to say that. Apologies, my friends. Far from it. No surer evidence could there. I wish you a joyous. Yeah, even if Thank you all. We have some other business. Very well. I'll. he seems busy. You're right. What do you think, traveler? He chalked it up to her being coy, but that doesn't sound like the hero. It bothers me also. But unfortunately, Yeah, how come? Whenever we come across stuff like this on I see. In my opinion, we face two obstacles in this case. Firstly, secondly, and more important, if we intervene without his. you do have a point. Everything in the world is intertwined. What looks like a simple outcome is often the result of multiple conflating reasons. तेरा battle pass Seeking कितना the हो गया? full truth would be a long and तेरा laborious कितना? sort of. 46? My opinion is something like this. 46 one. If the outcome is positive, and no, we don't know yet. I have to say, I'm impressed by your ability to zero in on the issue 46 से from such a 48 short अभी हो meeting. सकता है सिर्फ 3 wish करने Most हैं। insightful of you. You are thorough and एक thoughtful, achievement just as एक my task sister है ना describes. 50 wish करने का Huh? But Chisato and Kamaji क्या? have already 50 talked wish करने everything का? through, haven't they? एक task है battle pass में Only if we are to take Kujo Kamaji देखा है at his तूने? word. But there are two sides to every story. I wish to know Hiragi Chisato's angle on this. Huh. Don't worry about it. If she's as committed as well, life isn't always a smooth journey. Is it Hiragi State? Yeah. Yes, नहीं. ये पॉटर साबर हो गया पॉटर साबर There is still. Should we also invite? Paid dumplings I agree. मेरा battle hello pass there, पता नहीं, Yashiro इसका Commissioner. What do we owe? As it happens, would Lady Hiragi... All ladies into. But please, नॉट do come डिस्कस in. की है एक भी करी नहीं दी Isn't that You we don't wish to... Apologies for the interruption while you're busy with prep... Nonsense. We're merely doing the कुछ best बचा when the time जो comes. मैं That sounds अच्छा, splendid. We'll leave you to it. resin Take बचा है care, ना, Commissioner. resin खत्म कर देता हूँ सारा Seems like you guys talked a lot without actually saying anything. 46. Okay, obviously 47 हो जाए. 47 हो चुका है complete ley line deposit 20 time create total Hence team, why I 10 dislike small talk. furnishing Our timing was not ideal, but never mind. purchase 2 item a teleporter I spotted a stall on our way over where we can pass the time. The owner always manages to come up with novel ideas. I'm one of his regular customers. 675 मिलेगा आजा जी टीसीजी मैच खेलते हैं Cookie! आजा तुझे हराता हूँ साले. it's you.
Seems like मैंने ही जलेगा। सिखाया है, मेरी चीज मेरे पे I'd caught wind of this dango milk. मेरे पहले को When I देखना है noticed मेरे he'd- डेक में कार्ड कौन कौन Thanks, से हैं। gave साला me the मैंने car- कार्ड on the one खरीदे hand, थे so मैंने तो I कुछ gave चेंज him भी नहीं sounds किया अब interest. तक। I decided सुक्रोज to को get हटा as के well as सिर्फ Dango. स्पेशल रखी है और कुछ नहीं। What if I were to... और no बता रहे idea. मैंने सिखाया लोमड़ी के, तूने थोड़ी फिशल रखवाई थी। वो मेरे डेक में पहले से और थी। क्या भाई, You really think It's मैंने ही all तो बताया about था Traveler. किस तरह के कार्ड चलने हैं। चूस ले मेरे। yes, Dongo. An ordinary choice, but 2 dango milks and 1 milk with lavender melon. Please. No problem. Here, your milk is ready. Dongo milk taste. What about yours? A most memorable texture indeed. Your review seemed pretty Taste is your... obviously. Well said. Yes. Having my sister... We're just past. One or two things. Let's continue this to... I noticed something before we left the Hiragi clan's residence. No, it was just a... Naturally, they respond... But... What do you mean? Hiragi Shinsuke, Hiragi Chisato... But they didn't mention... Oh, I imagine they did keep a close eye. Yes, sir. Whoa! Where did you come? This is one of my most trusted members of the Shumatsuban. He's been quietly watching out for us this whole time. Merely doing my duty, sir. Keep a close watch on the clan representatives we met today. Well received. I'm on the case. Oh, and I almost forgot. That milk I just had? Please order one more and deliver it to Toma. As you wish, sir. Oh no, poor Toma. Sir Kamisato, Lady Hiragi's previous engagement is now Thank you kindly. Let's go and see. साला ये छोटे छोटे मिशन तो लंबे होते हैं। मिलता नहीं। खींचे जा रहा है स्टोरी चिंगम की तरह। कौन स्टोरी कौन खींचे जा रहा है? वो कौन सा कार्ड होता था जिससे कि एबिलिटी कैंसिल हो जाती? बताओ। Hi, nice to see you again, रे Chisato. वो जैसे कि It's been a तेरा while. फिशल का कौवा हटाना वाला होता है ना। This is बताओ a rare बनी हुई है। privilege, Sir Kamisato. It is not. You must be so. वो करता But of course. The Tricom, perhaps his अच्छा, joy is हाँ, अपने साथ infectious. ये For I am now... अच्छा, हाँ, लगा रखा है। I'm sure the new. Sounds like things. Yes, एक, दो, but तीन, come. It sounds like... Yes, in इससे case क्या you were होता है? wondering. Oh, He didn't mince his words. When But he acting has phase all. But became despite all, create he on pointed out. It's two just only too element Traditionally, used. after the wedding, Lady Hiragi will belong to the Kuj. Precisely. Gained one pigeon. When the card gained 3 pigeons, This is a discard the card I'm draw. so sorry. Two card is I can't one believe I'm only. making my guests listen to me complaining. No problem at all. The Yashiro One of Commission your has a character duty to without listen to maximum you. energy gain 1 energy. Now that I've heard your concerns, Okay. I should offer to help you as best I can. If the character For instance, uses by does helping not you have gather your thoughts energy, on the matter. they will gain Now, 1 energy. We heard from Sir Kujo that his decision to tie the knot was prompted by a letter he Convert received the from elemental you. dust But to we've also heard that you omni-elemental. did not write that letter. Sir Kujo thought that perhaps you were just being coy. Oh, dear. Create Perhaps omni I should have element. kept Your that part to current myself. active What? character gain 1 energy only. But that was Only Fancy 1 copy lettering on use. lost So I am one to copy. understand that had it not been for this letter, when it comes. Sir Kujo maintains that the letter was Crazy. penned by your hand. अभी सेल्समैन मेरे को चूना लगा के चला गया। अरे Either कैसे भाई? way, क्या It's wonderful. क्या Who कर गया? knows? क्या कर गया? Perhaps Sir Kujo was the one. भाई ये being बहुत coy. बड़बड़ कर रहे थे। मेरी आंख बंद हो गई थी I अभी 2 मिनट के understand. लिए। But सस्ते दाम में now- सोना Marriage is, it is also part of the Yashiro Commission's job to help people through difficult. I say this as to be together with. I'll take. All that matters is that you follow your heart. Since you'll be needing some time to think things over. Oh, wait. Thank you, Lady Traveler. Let's find. गैस वाला कंपनी से था। फाइव लेके चला गया एक्स्ट्रा। अबे Hiragi
Hiragi Chisato Hayato. I've said everything. The more I think about it, Strange. someone अरे wants वाह। Hiragi Chisato to be married as soon as possible. ले पहले Yes, स्लिप ले think लेने की। about this. When someone's words and actions do. Yes. Even had the. पहले But sleeve ले with लेनी चाहिए। Hiragi Chisato having married. Actually, we. Shinoji. Yes, sir. Did they take one of the. Yes. As I expect, they cannot afford. Hiragi Chisato. But. But why did the... Someone would. I think so. Her stance, despite all, when she formed. Marriage. Easier said than. We, meanwhile, are out in the open. If we attempt to stop this wedding from happening. At this stage, but first things first. मेरे tell me घर where वाले Shinoji- बताते भी नहीं है अगर कुछ ऑर्डर था। अरे यार ये भी एक दिक्कत है। Truth is also a lie. Ad Astra. Thank you for फोन के बैटरी यार थोड़ा एडजस्ट करना अगर मैं Put off until tomorrow what you can चैट do वैट मिस today. कर दूँ तो। ये फोन का बैटरी ज़रा डाउन है तो मैंने ऐसे टेढ़ा करके रखा है। ओए मत करना, सिलेंडर खत्म होने के बहुत ज्यादा। घर में खाना नहीं बनेगा फिर क्या करो? फिर चूल्हे पे खाना बनाना पड़ेगा। फिर वो तुम्हारा दिमाग गरम करके उस पे खाना बना के खाएं। Telling from experience. बहुत ज्यादा नहीं जा रही है इसमें। मैं तो 6 महीने में जा रहा हूँ, बाकी ये जाने। वाह वाह वाह, कहाँ जा रहे हो वैसे? गर्लफ्रेंड क्या? ऐ शिकारी, आजा आजा वीसी, शिकारी के वीसी आजा। नहीं रो। हाँ भाई शिकारी, क्या हाल है? मैंने मेरे हाल तो बढ़िया भाई, मैंने सुना तेरे हाल खराब हो गए। अरे यार भाई पता नहीं क्या हुआ एकदम से। सुबह उठा और देखा बाल क्या है? जड्डी में कुछ है ही नहीं है। Stop तो this. तबीयत This खराब is क्या? Yashiro. Well, we take orders from our... Really? कह रहा है सुबह उठा और चड्डी देखा, चड्डी में कुछ है ही नहीं। सही में? अरे चड्डी में नहीं, बाल कटवा के आया। बाल कटवाने के बाद ठंड लग गई मेरे को भाई। हाँ कल भाई। पूरे दिन सोया हूँ मैं। शिकारी। कल खेला कि फिर आपने कुछ? खेला ना हमने अपनी जिंदगी के साथ। नहीं स्ट्रीम नहीं करी थी क्या? वो तो लाइव एक्शन चलता है। अच्छा, एक बार स्क्रीन शेयर कर देते थे क्या? स्क्रीन शेयर कर। Battle formation! Get them!
मेरा लैपटॉप देख ले कब से वो है ना, कब गया था लास्ट टाइम में, परसों शाम को 6 बजे से चालू है, तेरे 12 पेज खोल रखे हैं स्ट्रीम। अब 3 दिन हो गए, सवा दिन चल रहा है, चार्ज लगा रखा है कमरे में बैठ के चला छोड़ रखा है। तभी बोले इतनी क्या था You cannot match my bravery. तुम आपस में लड़ रहे हो? नहीं, ये तो अपोनेंट है। Be still. Cascade. Blast. Let's go. वो दिखाओ क्या वो स्टूडियो? Watch We time must देखना report to होगा। Master right away. तू स्ट्रीम कर रहा है अभी? हाँ। और No need to follow them. और क्या, ये दिन में भी स्ट्रीम करता रहता है। We need bait to catch the रुकना fish थोड़ी। anyway. रुकेंगे नहीं, थकेंगे नहीं। I think I saw a key fall to the ground रुकेंगे during नहीं। the fight. Let's free Shinojo इतना first. हुआ कुछ बड़ा है? 3-12 हो गया है। In all the chaos, बड़ा है, बड़ा है। it must have been kicked to one side. कितना था? 2-9 पे आ गया था आई गेस। 3 पहुंच ही गया था। कल की स्ट्रीम में भी 14 मिले ना, Oh, don't tell Paimon that the Tanuki took it. दोपहर की स्ट्रीम में। Let's follow it and कितना see. बड़ा फिर? आ गया 2-3-1-2 पे आ गया है। 2312 पे आ गया, और पहले कितना था? 2-9 में था कुछ, 290 की 99 कुछ, 98। 3-1 ऐड नहीं हुआ ना अभी कल का, अच्छा 2 दिन लगते हैं, कल ऐड होगा। ये तो बहुत ही कम बड़ा है, 19 बड़ा है भाई। ऐसा कैसे? क्या तो रहो कल ऐड होगा। अच्छा कल ऐड होगा क्या मेरा वाला भी? हाँ। अच्छा Look for the key. तू नाच तेरी भैंस की। नीरू भाई आप क्या खेल रहे हो? जेनशिन। मैं सोच रहा था वो- जाके ट्विच पे स्ट्रीम करूं। अपने बॉल्स के साथ। कहाँ पे? ट्विच पे। टाइम की इसी जेनशिन की और किसी। देखते हैं लोग। और क्या? फिर न्यूरो वहाँ पे बात तब स्ट्रीम करे। अच्छा ओहो भाई ये आप लोगों के भी आ रही है दिक्कत है, येलो डॉलर वाली है। न्यूरो क्या आती है? भाई मेरे को देख, उस पे 1, 2, आ 3, रही 4, थी। 5, 6 पिछली 6 स्ट्रीम में येलो डॉलर। नहीं मेरे को उस पे आती थी, क्या कहते हैं, फॉरेस्ट पे। हाँ फॉरेस्ट पे। इस पे आ रही है मेरे को। तनुकी को फॉलो करो। कौन तनुकी? पूरा नाम तो बताओ। भाई अभी इंस्टाग्राम खोलता हूँ, पूरा नाम बताओ। तनुकी आगे के क्या Our suspicions were those behind this. हो गया? अबे क्या भाई क्या हो गया? Shinojo, Traveler, Paimon. Well, if it isn't the Yashiro Commissioner, I hear you wouldn't happen to be carrying out some sort of secret I heard that Shinojo may be your retainer. abuse out of nowhere. I dare say. गेम में जो नाच रहा है वो You're saying तनुकी that था। you're too अबे careful यार Choose छी, it, even if she मुझे लगा medically क्रेजी are एक की आईडी दे loyalty, रहा है। even if ठीक we भाई, This guy is good. अच्छे लोग Fine. कहाँ है भगवान? I'm sudden. For instance, आजकल a अच्छे merchant लोग from मिलते I'm क्यों नहीं? sure someone as erudite as you. कहाँ गए वो You'd लोग think, wouldn't you? जो पहले You're आईडी the शेयर best किया catch. करते थे? The reason they You far किसकी? from it. It is unbecoming of such people. Yashiro किसकी Commissioner. The आईडी है? evidence is. You studied in your years. I'm not angry.
This is at most उन्हीं you're लोगों की reaching rather outside जो of अपने your बायो में I लिखते थे think you are simply opposed to an looking for alliance someone between the Conjure Commission. So you come here. whom Let me be crystal whom I clear. can rely The on, notices have already been sent most to the public. Once the notices go जिस पे out, मैं अपना that's कंधा it. नहीं सर रख पे अपना कंधा I रख had के अबे मैं expected क्या you कह to रहा हूँ at जिसके least कंधे calm पे मैं अपना yourself. सर You've रख के made your move. What do रो you mean? सकूं, Do you see? Isn't it at all? सो सकूं, रो Goodness नहीं सो me. सकूं. ये तो न्यूरो की लाइनें लगती है। मैं देता Hey, what was all that? टॉक्सिक Paimon didn't. They had their scheme, अभी अभी but गूगल fortunately करता I रुक was जा. prepared. As I said, they ended up coming out from the shadows and revealing themselves. Let's see how things are in Inazuma City. ओ Then बेटे I'll take you through the details of my क्रेजी plan. भाई लव यू यार. ये हुई ना बात. क्रेजी जॉर्ड और व्हाट. देख रहा है न्यूरो नहीं लाइव देख डिस्कॉर्ड की. ए भाई आवाज मत करना, पागल है क्या कुत्ता. साला करवाया. इस एनपीसी को हराने में भाई बड़ा टाइम लगा. डुअल कर रहा था भाई, कितने कार्ड निकाल रहा था ये हरा. फॉलो भाई फॉलो, सीधे फॉलो. आ जा जेटी, कर लेते हैं 1v1. लॉर्ड मुल्कू हेलो यार, वेलकम टू द स्ट्रीम. हाउ आर यू डूइंग माय फ्रेंड. क्रेजी भाई वो हटा दो, मैं कह रहा हूँ ये राज अपने बीच ही रहना चाहिए, किसी और को ये मिलना नहीं चाहिए. पिज़्ज़ा कौन सा राजा निकाल रहा है. और चाहिए और भेज देना भाई, लेकिन अभी नहीं, अभी ये राज की बात है. अब हम धीरे धीरे बीच बीच में ऐसे बातचीत करते करते शेयर करेंगे ताकि किसी को छोटी सी भी भनक ना पड़े कि हम कर क्या रहे हैं. शेयर हटा का दो ये. मतलब ये है कि तुम जेटी तुमसे लेगा, लेकिन तुमको जेटी कभी कोई आईडी नहीं देगा. ये नाम हटा देता ताकि किसी को पता ना चले. फुल सीक्रेट भाई. कुछ दिनों में केस आने वाला है. जेटी हुआ गिरफ्तार. इसकी बदौलत न्यूरो की बदौलत. आर्टिफैक्ट फार्म करेगा क्या? मेरे पे रेजिन नहीं है. ये एक टांग पे खड़ी है. एक टांग पे खड़ी है. आजा, तू लड़ने वाला था ना, आजा. वन स्टार्ट में ही पहुंच. लड़ेगा तू मुझसे ओमड़ी के. आजा. मैंने कार्ड चेंज कर दिया वैसे. डरता हूँ क्या मैं तेरे कार्ड से. लेटा के मारूंगा तुझे, लेटा. मिसा तो आया तो लेके आता है मेरे सामने, शोगन लेके आता है. कामी साथ आया को कोई ही हटा दिया मैंने. तो किसको दूसरा रखा? कार्ड यूज कर रहा हूँ. लगता है गूगल पे देख के आया है. नहीं झूठ बोल रहा है, वो झूठ यार, बोल रहा है. वो है ना, क्या नाम है उसका, ओ क्या वाटर वाटर वाली, वो कौन सी बॉस है, हाँ उसको ले लिया है मैंने. मतलब ले लिया नहीं, उससे जीता था तो उसका ले लिया. उसका कार्ड मिला था ना मेरे को. तो ज्वाइन तो कर. अरे मैं डोमेन में हूँ. अब भोसड़ी क्यों रे को क्यों बोला. नशे में रहता है क्या. अच्छा खासा मैं वहाँ मिशन कर रहा था, बोल रहा 1v1 आ जाओ, और बोल रहा मैं डोमेन में हूँ. शाम को मैं बता रहा हूँ, शिकारी पीछे देख रहा है. एक्शन कमिंग, पूरी पूरी टाइम ऑन. Look at this. For sure. Good luck to the. Looks like the wedding is definitely going ahead. अरे मैं जा रहा हूँ एक की शादी रुकाने में. ये शादी नहीं हो सकती, रोक दो इस शादी. But only if Kujo Kamaji is willing to help us.
तो वो लोग शादी कर रहे हैं उसमें भी जीटी कोई दिक्कत Welcome. परिंदा इंसान ऑब्वियसली भाई, जब मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है तो मैं दूसरों को शादी कैसे करने दे It सकता seems so यानी तेरे को शादी करनी है ऐसा कहना चाहता है क्या नहीं? तो I see. So someone's... If you proceed with the... I've previously considered... or... तो शिकारी आज फिर I करोगे don't लाइव mean to, I'm sure you would, for the sake of... पक्का Are you ना really... हाँ I love अच्छा her. शिकारी, मैं That's why I कहूँगा keep एक बार Yashiro शुरू committed. करके It's देखना too late, जरूर isn't it? पहले मैं ट्राई कर I लूँ have कि a वही plan. दिक्कत So चल रही है Kujo, अभी की क्या। Are you willing to... If there's a way to हाँ salvage उसमें this... स्ट्रीम कब I've told the people the करेगा? context, but what if we were to... The क्या हुआ? only reason you have been hesitant to act स्ट्रीम since कब taking तक over the चालू Tenri, रहेगी? and so, once that स्ट्रीम is तो मैं achieved... दोपहर तक करूँगा, अभी बोलो तो अभी मैं बैकग्राउंड में शुरू कर दूँ। This isn't नहीं exactly... कोई दिक्कत By नहीं doing कर so, लेते stream। once our adverse... Then... अरे ये इसके डायलॉग बक बक चलते ही रहेंगे, We वो तो have to चलते make रहते हैं। sure that the behind-the-scenes story comes to the attention... Matsura, with whom... in क्या that बात है case, राजन, Sir क्या Kujo. देख लिया ऐसा? It's almost... यार हम भी डिजर्व करते हैं एक वैसी गूल फ्रेंड। गुड फ्रेंड क्या एक गुरुल फ्रेंड तो हम भी ऐसे डिजर्व करते जैसा क्रेजी ने फोटो दिखाया। हमारी किस्मत क्यों ऐसी फूटी है? की माँ की अखियाँ दूसरे में। YouTube पे शॉर्ट्स कैसे अपलोड करते थे? और न्यूरो को अच्छे से मालूम है। क्या? शॉर्ट्स कैसे अपलोड करते हैं YouTube पे? YouTube पे शॉर्ट्स कैसे अपलोड करते हैं हाँ अभी तक शॉर्ट्स डाले नहीं क्या कभी नहीं डाले हैं ना, मेरे को समझ नहीं आ रहा। वीडियो की तरह ही अपलोड होते हैं, अलग से ऑप्शन है कुछ? वीडियो की तरह अपलोड होता है। हाँ अपलोड वीडियो की तरह ही होता है उसका रेजोल्यूशन अगर उस तरह का होगा शॉर्ट्स का तो वो डायरेक्टली शॉर्ट्स कह देगा कि ये शॉर्ट्स है उसमें थंबनेल लगाने का ऑप्शन वगैरह वो सब छीन लेगा तुमसे हाँ फूटी हुई है, अरे फूटी तो है भाई, अगर फूटी नहीं होती तो फिर मैं यहाँ थोड़ी बैठा होता, मैं क्या? कहीं घूम रहा होता। तेरी बॉडी फूटी तो किस्मत बोल रहा है। फूटी है तो बहता वो आके चूस ले लोमड़ी के। ये तेरी छी भाई चूस ले भाई, वेस्ट मत जाने दे। जाके अपनी गर्लफ्रेंड को चूस अच्छा वही तो कह रहा हूँ, होती तो होनी चाहिए ना होनी चाहिए ना लोमड़ी के, वही तो मैं कह रहा हूँ, तभी तो फूटी। लोमड़िया साला थी तो तुझे बता तो रहा था कब थी, कहाँ थी? अरे बता नहीं रहा था जिससे तूने गिफ्ट लिया था भोसड़ी सारे बोल था उसको भी पता चल जाएगा गिफ्ट पता चला तो एक करके दरवाजे पिटाई और क्या जेटी हो सकता है ऐसा क्या? पता चला तेरी स्ट्रीम देख के वापस आ गया ऐसा कभी नहीं होता। क्यों क्यों का क्या मतलब होता है? शिकारी तुम तो जिनसे खेलते नहीं तुमने बनाया था ना एक बार अकाउंट नहीं बनाया, ऑफलाइन था वो, क्रैश पता नहीं है क्या। तो इसमें क्या कराया कि फ्री गेम तो जेनसिंग में भी तुम्हें क्रैक डाउनलोड करना पड़ा, छी भाई गंदा इंसान। पहले में फट गई है फ्री गेम मेरे को क्या पता था, तो उस टाइम पे मेरे दोस्त ने बताया। Very nice. फ्री गेम को भाई क्रैक कर रहा है, देख रहे हो इसको? मतलब क्या मजबूरी रही होगी? हाँ भाई पैसों की कमी थी तो न्यूरो से मांग लेता, न्यूरो दे देता किडनी बेच के। गर्लफ्रेंड की कमी थी तो न्यूरो को कह देता, न्यूरो लेट जाता। ये सारे एक्सपीरियंसदार इंसान बता रहा है ना। अरे एक्सपीरियंस, हाँ तभी तू ही तो एक्सपीरियंस है भाई, तू ही तो मुझे कह रहा था कि जेटी कुछ नहीं होता, मैं हूँ तेरे साथ। अच्छा ठीक तू है, डाल यदि जेटी तू तू लेगा मैं तेरे को सलाह मतलब तो आंखें बंद करके वो किसी और को इमेजिन कर। नहीं नहीं मैं तेरे को बोलता रहूंगा जेटी हौसला रख भाई, आराम से आराम। वो तो तू कहता था आराम से भाई, आराम से कर दो।
हाँ भाई, जीटी को दर्द नहीं होना चाहिए। खैर काफी पुरानी बात है, पुराने मुर्दे नहीं उखाड़ने। अच्छा। न्यूरो बदल गया है यार, अब सर्जरी करवा ली। वो सही नहीं होता। यूरोप यूरोप भाई अब अच्छा है यार, वो सीधा हो गया, सीधा आदमी है, अब वो सीधा आदमी है, बता रहा हूँ, मेंशन कर रहा हूँ अच्छे से। अच्छा, कृपया करके कोई उसे कुछ नहीं कहेगा। फेसड़ी के आर्टिफैक्ट वो वाले दे रहे हैं यार, हीलिंग वाले। साला मेरे को वेनेट के लिए, वेंटी के लिए आर्टिफैक्ट चाहिए, दे ही नहीं। ते कहीं के। और वो जो कमिस्ट क्राफ्टिंग बेंच में भी बनते हैं, वो भी एक नंबर के कूड़ा होते हैं। इसकी माँ का कितना लंबा खींचेगा ये? That person is one. Let's follow him. Seems like he's noticed us. हाथ क्या दिखाता है, लोमड़े के हाथ नहीं Knew जगा। we should have शिकारी, been तुमने कभी quieter. ट्राई किया है ट्विच पे स्ट्रीम करने का? यार किया तो था, सेटअप तो कर ली थी एक दिन मैंने। हाँ, फिर That person is. Let's मैं follow him. कड़ाचुक हो गया। कड़ाचुक हो गया? वो क्या होता है? अब कड़ाचुक मतलब कंफ्यूज। अब अच्छा। स्ट्रीम कैसे करूँ मैं? क्यों? उसका तो एक सॉफ्टवेयर आता है, मेरे पास तो है। पता नहीं, मैंने OBS मतलब मैंने स्ट्रीम लैब से यूट्यूब पे करा था, फिर OBS डाला, मैंने कहा OBS से उससे कर लेंगे ट्विच से, तो दोनों Could साथ it में be चलते related to ही the हैं। wedding announcement? अरे वो इस पे Maybe, स्ट्रीम करने but के लिए from the एक look on his अलग face, वो है, it seems like something much more वो serious. क्या? सॉफ्टवेयर He and his men seem pretty intense at the moment. ट्विच का। Isn't it all a bit excessive for a wedding? Seems like he's noticed us. What the fuck? Knew we should have been quieter. डिफेंस बहुत ही कूड़ा, अटैक डबल अटैक बहुत ही कूड़ा। That person is one of Matsura's न्यूरो ने informants. न्यू Let's follow अकाउंट him. बनाया क्या? किसका? जेंशिन का अलग तो रहा। अभी बनाऊंगा, पहले इस वाले अकाउंट के सारी चीजें खत्म कर दो। ओ भाई, एलिमेंट मास्टरी और एनर्जी रिचार्ज आर्टिफैक्ट अच्छा है। किसको दूं? वेंटी को Did you दूं या see that? टीम को? Sir Kujo Kamaji just came past here with a huge group of people. हाँ, Could it be related to the wedding announcement? crit damage, Maybe, crit but from the look on his face, it seems like something much more serious. He and his men seem pretty intense at the moment. where it is Isn't it all a bit excessive for a wedding? यार इनमें क्या करना पड़ता है? ये एड जैसे वीडियो अपलोड करते हैं, एड सूटेबिलिटी आता है एक ये, इनअप्रोप्रिएट लैंग्वेज उसमें 3 ऑप्शन होते हैं, अडल्ट कंटेंट उसमें 3 ऑप्शन होते हैं, वायलेंस उसमें 3 ऑप्शन है। इनमें क्या था लिंक करूँ? ये चीज तो न्यूरो जानते। निर्भय क्या क्या किसमें? वीडियो अपलोड करते हैं ना कोई भी, तो The एड 10 Rio सूटेबिलिटी नाम Commission से has वो sent आता a है load टैब। of people to Rito. उसके अंदर ये I guess it सबमिट must have रेटिंग का something to ऑप्शन do होता with the है। wedding. को तो डिसेबल I think डिसेबल in all बता there रहा must have हूँ, been डिफॉल्ट about रहने दो ना, 100 people जैसा है so वो far. वैसे ही रहने दो। डिफॉल्ट तुम्हें तो ऑप्शन doesn't sound होता ही good. नहीं है। What क्या could be बात कर going रहे हो? on? मेरा वीडियो अपलोड करता हूँ तो हेलो मेरे को शिकारी I hope राजन, it's हेलो just बोल। Sir दिखाना Kujo मेरे को लाइव Kamaji being हेलो भाई overcautious. कैसे हो? लाइव करके दिखाओ। हाँ एक सेकंड। तो क्या दिखा रहा है? नहीं दिखाऊंगा ऐसा क्या? The news is spreading fast, but it हाँ, appears Master's अच्छा fears may ये be well placed. मैं इसमें ये फर्स्ट वाला There's सेलेक्ट no कर way लेता they हूँ sent फिर this many people अरे just to ये escort the वो है bride. कि मतलब अगर I have to अगर तुम इसमें investigate. थर्ड वाला और मीडियम मतलब सेकंड वाला चूज करोगे तो जैसे बीच बीच में ऐड नहीं आते हैं, हाँ As तो expected. थर्ड वाला अगर चूज Let's करोगे follow तो him. बहुत ज्यादा ऐड आएंगे। सेकंड अच्छा वाला चूज करोगे तो थोड़े थोड़े ऐड आएंगे, Wow. और फर्स्ट वाला Excuse चूज me. करोगे तो Has बहुत ही something कम happened? ऐड I'm a आएंगे। businessman passing ऐसा है। through. इसमें ऐड ये Please don't be लिमिटेड एड्स alarmed. दिखा Sir रहा है Kujo इसमें, ये I देखो। see. अब We're here ये to नई not नई just नई start. तरह की पॉलिसी Sir और Kujo ऐड holds हो Lady चुकी है। ये Hiragi जो in the ये I तुम दिखा रहे हो understand. ना, ये तो अभी ऐड हुआ है, पहले तो ये था भी नहीं। हाँ हाँ पहले नहीं था, मेरे को पता है। तो अब ये चीज मैंने अपलोड नहीं की है, नहीं तो मेरे पूरा Drat. देख। तो It's इसमें से कौन exactly सा as सेलेक्ट Master. करूँ मैं? They say इसमें they're लिखा है here to देखो guard सबसे the पहला road. ऑप्शन सेलेक्ट कर रहा हूँ, Wait, सेव no. फॉर ऐड। I must सेकंड tell में Master लिमिटेड right ऐड, away. थर्ड में भी लिमिटेड एड्स। तो पहला ही वाला कर लो हाँ अगर वही तो। सेफ है। That should do it. Now,
We. हाँ पहला ही वाला If कर you're लो, curious to, limited I have करा some चलाओगे। other business. In any case, we've made our. Well then, goodbye for now. I truly hope that things will work out in Hiragi Chisato's best interests. अरे इसमें तो एक नन ऑफ अबाव आता था ना नीचे, उसको टिक कर दिया करो ना। अरे उसको टिक कर दिया करो, इतने सारे तुम्हें टिक करने की जरूरत ही नहीं है, वो अपने आप सारे टिक कर देगा ग्रीन में। ऐसा भी होता है? और क्या, तभी मैं सोचूं कि इतनी सारी चीजें कहाँ से आ रही है। ये वीडियो एलिमेंट, ऐड सबटाइटल्स, सबटाइटल अपने आप ही बन जाते हैं। शॉर्ट्स में भी ऐड करते हैं क्या एंड स्क्रीन पे? ये शॉर्ट्स तुम डाल रहे हो? हाँ। एक तरह जरा बैक करके दिखाओ, सबसे पहले वाले पे जाओ, डिटेल्स में सबसे पहले वाले। हाँ नीचे आओ जरा, नीचे आओ, नीचे आओ और स्क्रॉल करो। ये शॉर्ट्स में नहीं जा रहा है तुम्हारा, वीडियो में जा रहा है। हाँ ठीक है सर, क्योंकि शॉर्ट सेक्शन में तुम्हें थंबनेल का ऑप्शन ही नहीं देते वो। रेजुलेशन क्या है, कहाँ पड़ी है ये वीडियो? ये रही। प्रॉपर्टीज करो इसमें, नहीं नहीं प्रॉपर्टीज दिखाओ, प्रॉपर्टीज और सेकंड पे जाओ, थर्ड पे। हाँ ये देखो 1900 है ना, रेजोल्यूशन होता है इसका। हाँ लेकिन ये फिर भी वीडियो में जा रही है। किससे वो की है? फिल्मोरा से की है ना, तो उससे होता है थोड़ा सा गड़बड़। तुम्हें पहले एक शॉर्ट्स, तुम्हारे पास एक शॉर्ट्स होना चाहिए। वो क्या है, शॉर्ट फिल्मोरा पे शॉर्ट्स बनते नहीं है ना, वो साला वीडियो ही बनते बना हैं, देता। मैंने चेक करा यूट्यूब पे देख के ही बनाया मैंने। हाँ ये जो चीज यहाँ दिखा रहा है ना, ये होगा। तुम्हें क्या करना पड़ेगा, पहले एक शॉर्ट्स उठा के फिल्मोरा में डाल दो, तो वो रेजुलेशन अपने आप फिट कर देगा उसमें, वो दिखाएगा उतना ही। लेकिन तुम जब उसको डिलीट करके ये वाला पीछे लगा दोगे ना, तो वो शॉर्ट्स बन जाएगा। ऐसे अगर तुम डाल रहे हो तो ये वीडियो बन जाएगा, देख लेना। और इसको बाद में तुम वहां से अंदर से नहीं चेंज कर पाओगे, तुम्हें We arrived here, Sir Kujo. ये Since देखो we यहाँ haven't शॉर्ट्स fulfilled our नहीं, duties वीडियो में yet, we apologize. हाँ It was ये not our शॉर्ट्स हैं, तुम intention एक to stay शॉर्ट here अपना so long. डाउनलोड करो। We promise our presence if this अब जाओ फिल्मोरा में, न्यू प्रोजेक्ट में जाओ। How much longer does I have no idea. Master's been very अब on it. यहाँ I पे वो understand that he's वीडियो like, ड्रैग एंड ड्रॉप करो सीधा, If Lady Hiragi is really taking और नीचे एडिट में लाओ इसको। हाँ वो जो नहीं नहीं ये वाला नहीं चूज करना था तुम्हें, जो डिफॉल्ट वो दे रहा है वही रहने दो, ऊपर से पूरा कर करके करना पड़ेगा। आओगे ये तो इसमें सेट हो गया। Traveler, I assume you've heard about. Don't worry, we can explain पूरा ऐप everything. बंद करो। After the Tenryou Commission arrived, they suddenly... I never would have thought that... I'm sorry. Maybe there's... I used to tell myself, I didn't feel... I keep thinking back to what Sir Kame... I can happily accept that, but... Ah, Lady Hura. वो जिस You, what do you think you're... Calm down. Friends, Lady Hirag, you are extreme. Who's to say? If you want to accuse us of... Don't be rude. Listen to me. The present state of... This is not an orchard. Understood. I was so nervous. हाँ हाँ हाँ। Things are now so critical that I should at least give it a try. अब इसमें तुम वो वाला डालो, अपनी पीछे इस वाले अपनी वीडियो जो We एडिट had कर a रहे हो serious वो डालो। discussion and reflected on... In all honesty... I'm so sorry. Would you... I suppose हाँ अब you're इसको right. The only person... We'll head off to पीछे the पीछे Kamisato करो। estate. नहीं नहीं Lady नहीं रुक Hiragi. जाओ, तुमने डिलीट क्यों कर दिया? आ जाएगा शायद प्रोजेक्ट उतना ही। ये देखो ये यहाँ बता देगा प्रोजेक्ट सेटिंग्स में। हाँ ठीक है By ठीक the है। way, aren't you a good friend of the Aspect ratio है Yashiro ना, Commissioner? पोर्ट्रेट ये वाला सेलेक्ट होता है इसके अंदर। Please put हाँ in some good वो words मत for करना, me. कुछ भी मत करना, जो जैसा है वैसे ही रहना। वो वहाँ पे सेलेक्ट करोगे ना, वो वीडियो ही बना देगा। मैं देख शॉर्ट सेक्शन में बनाया था मैंने भी, वो हरामजादा उससे ही बना देता है। रेजोल्यूशन यही रहने दो कुछ इसका? मत करो, जैसा है वैसे ही रहने दो।
क्योंकि फिर वो शॉर्ट्स नहीं रहेगा, फिर वो वीडियो बना देगा। तुम रेजुलेशन उसका करना चाहोगे शॉर्ट्स में, लेकिन वो वैसे ही करेगा। या तो फिर तुम एक I'm काम कर sorry, सकते Mr. हो, Matsura. I'm तुमने exceptionally अगर इस busy and तरह का have but a बनाया है moment ना, to तो spare तुम before my next engagement. एडोब चलाते हो? I fear this leaves no time for अरे small talk, मैंने so पहले भी please, शॉर्ट्स डाले हैं, जो if you शॉर्ट would be डाले हैं ना so ये वाले kind. पहले वाले। हाँ, तो वो ये ऐसे ही तुम्हारा जो डाले। शॉर्ट तुम बना रहे हो ना, ये वीडियो जा रहा But है, we really, Lady ये शॉर्ट Hiragi is नहीं है। so. Would it be at all possible for you to talk to Sir Kujo ये once सेम more चल रहा है देखो। on our behalf? अरे मैं They बताता make हूँ, it सुनो। sound so तुमने easy. जो वीडियो बनाई The है ना, Tri-Commission will be ridiculed उसको by the कन्वर्ट public if करने we के choose लिए to मैं withdraw तुम्हें the इनको notices देता हूँ। now and to lose face for. ये एडोब की वेबसाइट है, यहाँ पे we'll do आईडी लगाओ But और the अपनी situation, if we ये fail to वीडियो try को keeping a pet bird, ड्रैग एंड you'll ड्रॉप see what करके I उसे mean. शॉर्ट्स में कन्वर्ट कर दो। वहाँ पे Songbirds who लिखा know रहता है how कि to तुम्हें hold it, बनाना and क्या as for है, the ones with शॉर्ट excessively बनाना है long क्या, tongues, तो शॉर्ट बना well, देगा they're उसमें। so insufferable that they can't be kept as pets at all. Yes, I've listened to your concerns, and I'll talk to Sir Kujo for you. I understand. All right, you ought to return now. अब Okay. यहाँ पे जाओ। Then please. कहाँ पे होता था यार भाई? थंबनेल का ऑप्शन देता है भैया, मेरे को जितना पता है ना। शॉर्ट्स में थंबनेल Yes, कहाँ Lady लगेगा, ये Hiragi, भी तो बताओ। I have something to tell you. तुम डाल के Would देख you लो mind? वीडियो, वो वीडियो सेक्शन में चला जाएगा। इसमें तुमने right. इसको एडिट पे जाओ, देता तो है देखो। वैसे। Yes. एडिट पे गया। Sakami Sato. हाँ, Unreleased servant, but डिटेल में जाओ, नीचे जाओ now और नीचे जाओ, I'd देखो like to कहाँ take शॉर्ट्स off का my वो commissioner कहाँ है। hat and For now you can't share change a the personal thumbnail on story your with short. you. Oh, please. शॉर्ट I'd में love to hear ऑप्शन ही it. नहीं रहता, You 5-6 must have सेकंड की heard my वीडियो में father, तुम my mother. This sudden turn, देगा ही everyone नहीं, thought वो that ऑप्शन ही it नहीं may देगा। sound preposterous. Back वो then, देखो ऊपर I लिखा had है ना no other वीडियो, choice. I कस्टमाइजेशन had साइज to पे honor जाओ, my कस्टम parents' साइज। dying wishes, and I also had a young sister to take care of. I अरे didn't mind कहाँ what होता became था of भाई, me, मैं भूल ही गया, but my काफी टाइम से family. उसको यूज भी नहीं किया। वीडियो में No होगा one ना, can और ever यू be में किधर allowed to ढूंढ रहे हो? trample over my precious family. और वीडियो। Fortunately, I persisted, and the Kamisato हाँ, clan was इसी में जाओ, able to स्टार्ट survive फ्रॉम the योर वीडियो, storm. जहाँ ये पहला I नंबर वाला think I दिया। now know where my YouTube sense Shorts of है तो वहाँ पे loss and option। confusion was coming हाँ, from. हाँ ये रहा। Shinojo once told me that he saw what was in me in a way that no one else did. That's why he couldn't bear to नहीं, see me create live करो, the create। rest of my life depending on अब यहाँ someone पे else. I thought the skip करो, reason I skip, felt skip, un- The reason why That's it. When his plan, it is time for me to make a stand and become my own person. Well said. I'm sure once you have, it might not sound. And I'm sure I will use this puts less pressure. My best wishes. Thank you, Sir Kami. Now, if you'll excuse me, अब care, इसमें lady. एक्सट्रैक्ट Yes. करने का ऑप्शन आ in रहा है fact, कहीं? डाउनलोड पे जाओ। She really नहीं has नहीं the नहीं, air जो of a क्वालिटी है वैसे ही princess. रहने दो। In fact, our rival did. देखो शॉर्ट्स में आ रहा है क्या? Anyway, I agree. अरे तो Stability ये and शॉर्ट्स ही enough. बना देता है, मतलब Perhaps इसको for मैंने Master यूज Matsura, किया a है, लेकिन stable बहुत टाइम हो nation गया, is मैं the भूल गया। prerequisite. But all I have tried to do is make क्योंकि अभी sure मैं that फिल्म वालों पे another वही positive चीज कर लेता outcome हूँ is that ना, everyone पहले recognizes शॉर्ट्स dealing डाल with दो, the उसके Hiragi बाद clan. अपना शॉर्ट लगा लो, तो वो If साइज you कर choose देता to है give up उसका your ही। stance on, I didn't want to see her suffer because she now. okay then. Guess we'll have to wait. All right. क्या ये क्वेस्ट खत्म हुआ? Looks like everything's resolved. Masterfully done. Everything was perfect. Well, except for one minor detail. I somehow ended. Didn't you like it? I distinctly remember you saying you are quite partial to exotic flavors. Oh! My lord? The traveler had one of those as well. Ah, I'm sure he's made a great impression on you. The traveler did indeed play a critical role in this case. I'm sure both families. It wouldn't have been so. There you go again, my lord. Naturally. Ah, yes. Now that we're both free, let's finish off that game of chess we started a few. फाइनली खत्म 60 प्रीमोस और
ये भी सेम है देखो। Strike a pose. Shadow Raven. One with the forest. कप एनर्जी नेक्टर दे दे हम। Keep up. Keep up. इधर अपलोड करके देखो। आ जा जेठे, कल करते हैं 1v1। हैं 1v1 कार्ड गेम ज्वाइन कर। मैं उसे मारने जा रहा था। मत मार। It's so hot. Hey, Even a there you mist are. flower would melt in this heat. Yeah. अरे बत्ती पता नहीं कहाँ चली गई। बारिश हो रही थी सुबह सुबह, ठंड का मौसम और भयंकर होने वाला है। सितारे। हाँ यार ये तो गई तो उसी में ही है। इसमें वीडियो शॉर्ट्स में में ही गई है। वीडियो में गई है ना, देखा बोला था। पहले प्राइवेट ऐसे कैसे ही हो Don't गई be है? afraid to make mistakes. It's all part of the learning process. या फिर डिलीट कर दो उसे। यहाँ पे क्या करना है चुटिया? बात हो तुझसे। जाके इनवाइट से। भाई इतना लैग काहे हो रहा है? भाई तू अपने वर्ड में भी कैरेक्टर चेंज कर रहा है, चोमटी है क्या? मैं बोलता रहा, मैं उसको मारने जा रहा हूँ। चल मेरे साथ आ जा। ये टेंडर हाइपोस्टेसिस को। अबे उसको मारने जा रहा है? तो तूने वहाँ का टीपी नहीं खोला क्या अभी तक? नहीं खोला है ना। जा अच्छा तू टीपी खोल, फिर मैं आता हूँ। ओए चल मेरे साथ। भाई इतनी दूर ना तो उड़ के जा रहा मैं। तो मेरे साथ तो चल कम से कम। दौड़ के नहीं तेरे जाएगा, दौड़ के मैं जा रहा हूँ। तू टीपी कर लेना फिर। हाँ ये लान है तो तेरे पास भागने के लिए। तेरे भी रो रहा है। Over here. Make my escape. ले भाई तेरा इवेंट मैं कंप्लीट करना अंदर होता में है। आप कहीं से एडिट करते हैं आपकी वीडियोस? हैं? आप कहीं से एडिट करते हैं आपकी वीडियो? हाँ मैं फिल्म हो रहा ही चला था, तभी तो बताया था। फिल्मोरा का है ही वो लफड़ा थोड़ा।
तो एक चीज बताओ। जैसे मेरे पास एक कोई रॉ वीडियो पड़ी है, उसके मेरे को क्लिप्स काट काट के चाहिए, तो मैंने वो क्लिप्स काट काट के एक उसमें पटक ली है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ वो क्लिप्स है ना जो कटी हुई पड़ी है, वो रेंडर होके अलग अलग मेरे पास आ जाए, तो वो कैसे होगी? रेंडर होके अलग अलग तुम्हारे पास हाँ, जैसे कोई 5-5 सेकंड की क्लिप्स मैंने काट ली है, और वो 5-5 सेकंड के क्लिप्स कट मतलब के काट ली है तो डाउनलोड की है कि नहीं ये बताओ मेरे को। काटने से मतलब फिल्मोरा में काट ली। हाँ, तो अब वो 5 सेकंड का वीडियो मेरे को रेंडर होके और मेरे को डाउनलोड मतलब मेरे पीसी में चाहिए, तो वो कैसे होगा? तो वहाँ पे आता है ना एक्स्ट्रा, क्या कहते हैं उसे, एक्सट्रैक्ट या एक्सपोर्ट। हाँ, एक्सपोर्ट कर लिया। जैसे देखो मेरी स्क्रीन देखो, चलो रेटिंग वैसे भी ज़्यादा दिखाई दे रहा है तो मैंने थोड़ी देर खराब, ठीक है दिखाना। हाँ, जैसे मैंने कोई प्रोजेक्ट अब जैसे मैंने एक के अंदर ही, ये मेरा एक शॉट है, ये वाला, ये एक शॉट है, ये मेरा दूसरा शॉट है, और ये मेरा तीसरा शॉट है, ठीक है। अब जैसे ही मैं इसको रेंडर मारूंगा तो खाली ये वाला रेंडर होगा, क्योंकि वो ऊपर है ना। हाँ, क्योंकि वो ऊपर है। हाँ तो है ना, लेकिन ये रेंडर निकल गया कितने सेकंड का? 1 मिनट 30 सेकंड का। बाकी में ये देखो कुछ दिक्कत आ रही है। जैसे मेरा ये वाला रेंडर था, ये हो गया, ये मेरा शॉट खत्म हुआ यहाँ पे, उसके बाद ये ब्लैक स्क्रीन क्यों चल रही है? क्योंकि या तो तुम्हारा म्यूजिक आगे तक है या फिर कोई वॉइस वगैरह जो बची हुई है। आगे देखो कट करके आगे कोई होगी। 1 मिनट 22 सेकंड वहां दिखा रहा है ना ऊपर वीडियो, यानी तुम्हारी 1 मिनट 22 सेकंड की वीडियो बनी है, तो शॉर्ट्स तो 1 मिनट से कम ही होना चाहिए। ये तो मैं समझ गया। हाँ, ये मैंने ध्यान में नहीं दिया फिर। तो वो तुम्हें हटाना पड़ेगा जो एक्स्ट्रा तुमने लगाया है। नहीं हो रहा। तो अब जैसे मेरे को एक चीज बताओ, मेरे को इसका अलग रेंडर चाहिए, इसका अलग रेंडर चाहिए, और इसके ऊपर वाली का अलग, इसका रेंडर अलग चाहिए, तो वो कैसे करूंगा मैं? सिलेक्ट करके ग्रुप कर लो, एक्सपोर्ट मार लो। ये ग्रुप करके एक्सपोर्ट का है? अच्छा, वाह भाई, ऐसा भी होता है। May the glory of the princessen bring light to this world. नई चीजें सीख रहा है। मुझे भी पता नहीं था, बट मैं एडोब में मैंने याद था। तेरे को ये वैसे क्यों मारना है? याओ लेवल अप करने के लिए। याओ के लिए इसका ये लगता है? हैरी ने बताया तो था। मेरे पास अभी कोई कैरेक्टर नहीं जिसमें इसका कुछ लगता हो। मार 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 मार। By royal decree. साला ये रन के अल्टीमेट 24 का कवर हो गया था। Midnight phantasmagoria. Fire, fire, inside fire. तू बैनर क्या लेकर आया? ऐसे Here comes the steel light. Let's light it up. चल तेरी बारी आ गई। मार सिटी, क्योंकि मेरे पास नहीं है। क्या हो दे रहा कुछ? डेंड्रो मारना है तेरे को, वो तेरे को फुल अप करना है। तू डेंड्रो कैरेक्टर नहीं लेकर आया है भाई। मुझे क्या पता था क्या करना है? हाँ बस चोमटिया उस दिन मारा था, भूल गया। साले मुझे समझा ही नहीं। बाहर आ भाई। डेंड्रो कैरेक्टर चाहिए। हाँ, वो मरेगा ही नहीं उससे। बैनर हटा, डेंड्रो कैरेक्टर ले कोई।
ले रहा हूँ, टिगनारी है मेरा। बोलो मेरे को टिगनारी लोगों ने बोला तो था किसी कारण के लिए चाहिए था। भाई वसूली बनती कर दी, पूरी कबाड़ा कर दिया लोंडे ने। तो फिर एक बैनर रख लेता हूँ आग लगाने के लिए। काहे के लिए बैनर क्यों रखना है तेरे को? एक अचीवमेंट दिया है कि तो वो वाला आग लगाना था लास्ट में से। अरे तेरी भैंस की टैट बकचोदी बनते। तेरे को ये मारना ही तो है ना, तो मैं तो मार ही दे रहा हूँ। मार मार। इम्यून है वो। मेरी कुछ तो गड़बड़ हो रही है। जैसे मैंने सारी चीज सेलेक्ट कर ली, ग्रुप कर दिया उनको, ठीक है, और फिर उनको रेंडर निकालूंगा तो एक साथ रेंडर होनी चाहिए सारी। एक साथ सारी वीडियो अलग अलग रेंडर होनी चाहिए, ऐसा तुम कह रहे हो? ऐसा नहीं, ऐसा हो रहा है जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। तेरी बारी, मार इसको डेंटो। मारता रहे मारता रहे मारता रहे। अरे डेंटो फायरो क्यों मार रहा है? डेंड्रो ही मार रहा है। फायरो मार के उसको और लो कर रहा है। तेरे डेंटो चलाना है। फायरो मार दी। ज्यादा डेंड्रो चाहिए क्या एकदम? नहीं काम हो जाएगा, लेकिन तूने पायरो बीच में एक अटैक मार दिया तो पहाड़ा कर दिया उसको। तो नहीं पायरो का है मारा। तेरा मैंने हील नहीं कर रहा थी, तूने हीलिंग बोनस कम कर रखा है क्या इसका? अरे मार मार मार। हाँ तेरी बारी आ गई शायद। चल डेंड्रो मार। नहीं अभी वो है, वो गया, खुद ही मर गया। मार मार डेंड्रो मार। चार के साथ क्यों मैं एक्टिवेट रेजोनेटर क्या? अरे ई मार। जल्दी हो गया ऑलमोस्ट। यस नाइस। देख ये करना है ना। 2 मिनट का काम 2 घंटे को ना रहा है। वो एलिमेंटल मास्टर क्रिएटर यार मेरे को भी दोबारा शॉर्ट्स बनाने चाहिए, मैंने शॉर्ट्स बनाने बंद कर दिए। क्या बात कर रहा है? 2 शॉट्स मुझे भी भेज देना। क्या तेरे को कहाँ भी सुखा जा रहा, जाते चाह के मेहनत कर एल भाई। साइज हाँ। एल साइज ज्यादा छोटे शॉट्स पहन। इधर गई मेरी, आओ यार। यार बत्ती इतनी देर हो गई हुई अभी तक नहीं है। लगता है PC बंद करना पड़ जाएगा। जेटी जल्दी इनवाइट मार, नहीं तो मैं जा रहा हूँ बंद करके। आजा 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 आजा। तो किधर गया? तो इनवाइट दे, मैं ज्वाइन तो कर ही लूंगा, उससे क्या फर्क पड़ता है? क्यों नहीं फर्क पड़ता भाई? फर्क पड़ता है। इनवाइट दे। दोनों प्लेयर्स के यहाँ होना जरूरी है।
किधर चला गया? आज शिकारी करेगा ट्विच पे स्ट्रीम twitch.tv/शिकारी अरे शिकारी, ओ भाई इधर देखो पहले, मेरे को बताओ। मैं तो सब भुला गया हूँ भाई। बुला देना। हाँ, भुला दिया उसको तो मैंने। हाँ, ऐसा है क्या? क्या भाई? एक दूसरे पीसी में अरे चले, जेटी स्ट्रीम करता है। हाँ? क्या कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं। हाँ तो अब न्यूरो भाई मेरे को देखो सबसे। अपना ही राज। तुमको देखो शिकारी। हाँ, देख रहे हो क्या? हाँ। ये मैंने कर ली इसको 60 सेकंड से नीचे की। ठीक है, शॉर्ट्स इतना ही होना चाहिए ना। हाँ। ठीक है, अब मेरे को चाहिए इनका एक बारी में एक वीडियो बन के निकल जाए, इनका एक शॉर्ट बन के निकल जाए। वो कैसे करूँ मैं? राइट क्लिक करो पहले उस पे, क्या आ रहा है देखे हम। किया मैंने राइट क्लिक। लेकिन तुम्हारी एक वीडियो तो दूसरे को ओवरलैप कर रही है ना। ऊपर जाओ, ऊपर जाओ। अब जैसे तुमने ये सेकंड नंबर वाले जो तुमने लगा रखी है वीडियो, हाँ, इसके ऊपर की, इसके ऊपर की, हाँ तो दिखेगी। तो ये ना नीचे वाली क्यों लगा रखी है? नहीं वो तो नहीं, ये मैं बताऊँ, ये देखो ये क्या चीज़ है। ये फेस कैम देख रहे हो? हाँ। ये फेस कैम मैंने इस वाली वीडियो से लिया है, और जो बैकग्राउंड है ना वो मैंने इस वाली वीडियो से लिया है। एक्सपो डेली स्ट्रीम करते हो क्या? यस ब्रो। अगर मैं कहीं निकल जाऊँ तो ही नहीं करता, नहीं तो अच्छा, डेली करता हूँ। तो अभी क्या प्रॉब्लम है? अभी प्रॉब्लम ये है, मैं इसको एक्सट्रैक्ट करूँ। In the name of the princessin. मैंने जैसे ये डिसेबल कर दी ये वाली सारी, तो इनका रेंडर नहीं निकलेगा ना। हाँ। ये मैंने एक्सपोर्ट की माइनक्राफ्ट शॉट हायर कस्टम रेजोल्यूशन। ओ शिकारी कंटेंट निकला जा रहा है। हेलो भाई, क्या हाल है आदित्य? अरे कट क्यों रहा है भाई? चल जेटी तेरी चाल है। चाल तो वो चल गई हमारे। ये गंदी वीडियो। ओ भाई, काया को सकून है भाई, और हिलाया भी तेरा। क्या फिल्मोरा यूज करता है क्या? हाँ, इसने हाथ में रखा रखा है। I summon thee. इसमें There is no escape. ये शवल है, मिट्टी फाड़ मिट्टी हटा। चल जेटी चाल चाल चाल। ये किस राइड में आ गया? मतलब शादी वादी का नहीं होता तो मिला ना भाई, गर्लफ्रेंड की शादी हो गई कल मेरी। दुख दर्द पीड़ा। In the image of the wilderness. जा नहीं पाया वो, और भी ज्यादा दुख दर्द पीड़ा। खाना पीना हुआ वाला लड़का पक्का वीडियो देख के आया ना न्यूरो कुत्ते? मैं वीडियो देख के नहीं, ये ऐसे ही चल रहा है अपने आप। इन द बिगिनिंग, तो बेनिंग होता है बेनिंग। इन द बिगिनिंग। को डालो इधर। क्या बात है, क्या बात है। किधर 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 किधर? अच्छा, जीटीए की चाल है, जीटी तेरी चाल है। शॉट 1 है, चलो शॉट 2 तेरी है। की एंड। तो मजा आने वाला है बिल्ला, मजा आएगा। कौन सा फिल्म हो रहा है शिकारी? 12।
नॉर्मल अटैक मारता है, शर्म नहीं आता है? और यूज कर लिया। This will be interesting. मैंने देखा अपडेटेड है, यूज कर लिया। ब्रो देखा Free. Not water, too. यार मेरे पास डाइस नहीं है। माइनक्राफ्ट खेलते हो क्या? यस ब्रो, माइनक्राफ्ट होने वाली है आज शाम को स्ट्रीम 9 बजे, बिना भूले आ जाना। मैं खेलेंगे अबे क्या बोल रहा हूँ, मैं हूँ, न्यूरो है और शिकारी भी है। नहीं उताव भी है भाई। उताव क्या तो मुंह से वही उताव ही निकल रहा था, मैं क्या करूँ भाई। हार्ड खेल क्या चल रहा है? ये कौन सा रेंडर मार दिया, कौन सा क्या हो रहा है, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है मुझे। ये है 56 सेकंड, ठीक है ठीक है। के अंदर कोनन एग्जाइल, ओ ये कोनन एग्जाइल यार, उसके डीएलसीज नहीं है यार आगे के, तो आगे स्टोरी बढ़ नहीं रही। कोनन एग्जाइल खत्म किया था हमने। ये इसमें यूज हो गया। चिट्ठी चलाएगा अपनी काया की अल्ट। ले खा फिर देख यार वो वीडियो, तो भाई ये क्या हो रहा है? वीडियो की तरह रेंडर खिला ले लोमड़ी के, सब खिला ले एक साथ। एवर प्लान्ड ऑन प्लेइंग माइनक्राफ्ट विद चैट? ऑब्वियसली ब्रो, बट फिलहाल अभी इतना सर्वर वगैरह का दिक्कत है, इसलिए अभी हो नहीं रहा। कल बहुत ठीक है। कल आना, कल दोस्त तेरी, कल आना। कैसा था वो? ऐसे ही था। अरे पत्ते इस्तेमाल कर दे रहा है एक ही बार। मेरे मन में हो रही है ये इच्छा, मारो नहीं बहुत जोर। तेरे पे डाइस कितनी है न्यूरो? 5। क्या? Let's finish this swiftly. और आदित्य क्या खेल रहा है आजकल? कुछ नहीं यार, अभी तो 10 दिन बाद घर आया। क्यों, कहाँ गया था? इंदौर में आया था, ट्रिप उसके बाद आया तो ओए बची 3। इंदौर में सुना है ठंड पड़ गई भयंकर। नहीं तो छोटी सी नहीं, इंदौर से दोस्त है। आज शायद जयपुर जा रहा है। जयपुर यहाँ पे आएगा मतलब? हाँ वापस जा रहे हैं। अच्छा मेरा भी देखो क्या होता है। सबको भाई ये कौन सा क्या रेंडर निकाला है? ये माइन वाला है। हीरो बस एक मौका मिल जाए, बस एक मौका, दुनिया हिला देंगे। देख सिर्फ मैंने गलत वीडियो डिलीट कर दी। भाई दुख दर्द पीड़ा। हील करे ले रहा है। ये है वाटर वाली। इस कार्ड से होता क्या है? ओमनीडाइज बन जाती है, यूनिवर्सल वाली। तुझे पावर वाले चेस बना ठीक है, पावर वाले चेस बना तुझे।
If you ever look for someone in chat to play Minecraft, I can come anytime. I'm looking for some people to play Minecraft with. Think you are a nice person. Thank you, my friend. Thank you. Neuro, In the name of the तुम्हारा princess वक्त हो sin. चुका है. चलो. थोड़े टाइम लगता है. स्टार्टिंग में सिर में दर्द होएगा तेरे. तब बकचोदी हुई. I will support you 100%. Thank you, Expo. अब आदत ही हो गई अबे है. मैं बंद कर रहा हूँ, लाइट नहीं आ रही बहुत देर से. क्यों ईला डाला ना? मैं दोनों से खेल लेता हूँ. जब मेरी इच्छा करती है ना कि हाँ भाई आके बचा लो, तब मैं बचा लेता हूँ. तब लगता है थोड़ी ताव वाला फोड़ दूँ, कार्ड तो मैं लास्ट फोड़ में देता आया है. हूँ. पहले आता तो तेरी पहली ही बजा देता हूँ. इसलिए तो मैंने एक कार्ड रखा था सैक्रिफाइस के लिए पहले ही. मुझे तो सिर्फ शुरू के दिन में अजीब सा लगता है. थोड़े दिन मेरी वो चाहिए विशेल. आंखों में दर्द होएगा. सर दुखेगा. हाँ. ये कौन गया? बत्ती नहीं आ रही ना. अच्छा अच्छा अच्छा. यार मैंने गलत वीडियो डिलीट कर दी. मेरी रॉ वीडियो भी डिलीट कर दी, वो भी डिलीट कर दी. वाह यार. हिप डिलीट. See you bro. Bye bye. प्रोजेक्ट तो पड़ा हो. कितना हो? ये है वाटर वाली. ठीक है, इसको कर दो डिसेबल. इसको कर दो enable. ये वीडियो चाहिए हमको. फायर. ये भी है मेरे पास. तो कौन सी नहीं है? वॉर्डन खेल रहा है. चल ठीक है. मैंने तो यार अनइंस्टॉल कर दिया. साला खेला ही नहीं है मुझसे. पिट गया बहुत खंडा. कब? ओके. फ्री आएगा ना वैसे? कब आएगा वैसे? ये दिसंबर में. कुछ डेट मुझे एग्जैक्ट नहीं आता. दिसंबर में ये लेकिन डेट. चल खेलेंगे वॉर्डन 3. चल ब्रो फिर आता हूँ. ओके ओके. जस्ट चला. आओ आओ.
320. The show begins! You look like you're... One with the force. 20K. Yeah. Rah. Killer Fury. Build healer. Take 7 UG. यार टीम सेलेक्ट डैमेज और बूस्ट होगा Bow your head. Eyes on me! Be sanctified. Everybody stand back! Huh? Settle down. The tides beckon. And shroud. Yeah. I hear everything.
One with the force. Let's nip that in the bud. And shroud. I hear everything. You, Blade, you're up. By royal decree. Can't see? I'll approve you. फालतू में चला दिया. The show begins. Don't be scared. And shroud. Wings of darkness. 21. Let my name echo in song. Oh, rip, ready, go! You, Blade. Can't see? I hear everything. डैमेज बट हो गया. Bow your head. Justice is blindsided. Be sanctified. It's not. How brightly burns the truth! Silence! Revelation from on high! Bow your head. The power of flame compels me. Let the mighty be humbled. Settle down. Let's light it up. Teamwork is out. Bow your head. ये की शॉट में खत्म हो. Kill 2. Stay put. I'll approve you. Shadow Raven, let night fall. Don't be scared. One with the force. I hear everything. The show begins. Stay put. Oz, reveal thyself. Can't see? I'll approve you. Let the world come alive. Pain, go away. You. By royal decree. And shroud. I hear everything. The show begins.
As you wish, main Fräulein. One with the forest. Your journey ends here, Lord of Sand. Your sacrifice is ready. Uruguay, you're up! Odds revealed by... Pound it to the ground! I'll uproot you! इसका एनर्जी रिचार्ज बहुत कम है। By royal decree. Can't see? Let's nip that in the bud. Pound it to the ground! Wings of darkness. Come, sever night. One thing after another. I hear everything. Uruguay, you're... Odds insubordination. Off we go. We meet at last. Please appreciate my sincerity. Please hold for just a moment. I've been outsmarted. Settle down. An oversight on my part. Be sanctified. You know it. Very remarkable. Could I scare you? I've warned you. Silence. Let my magic begin. अब आ गया Please hold for just a moment. Forgive me. Go in. A grand surprise. Bow your head. Please remain seated. Which must go on. Apologies. Please remain seated. I've warned you. Silence. The banquet must go on. The tides beckon. Did I scare you? Please remain seated. Bow your head. Eyes on me. A gift for you. A grand surprise. Isn't good. Justice is blindsided. Banquet must go on. Please remain seated. Teamwork is dreamwork. That's gonna hurt in the morning. क्रिट तो पढ़ना ही। Showing your face. Time to shine. Go get it, Uruguay. By royal decree. Can't see? How brilliant! As you wish, main Fräulein. One with the forest. Let's nip that in the bud. Can't see? I'll uproot you! One with the force. Let's nip that in the bud. May I
hear everything. Let my name echo in song. You sure? Hey, nope. Ha! Shadow Raven. And Shroud. Never mind. तो फिर शिकारी आराम करो तो। आराम नहीं कर रहा। What's काम ही काम। तू गेम खेल रहा है? हाँ तो चल ही रहा है ये। हाँ तो चलने दे, तो मैं भी खेलती रहूँ तेरे से। एक साइड स्ट्रीम चल रही है, एक साइड काम चल रहा है। मुझे नहीं आ करूँ क्या आज। साला आ रहा है बहुत। क्या आ रहा है? आज करने जैसा कुछ है नहीं इसमें। रेजिन वगैरह सब यूज कर लिए। फाइट है नहीं कुछ। टेस्ट ढूंढने का मन नहीं कर रहा स्टोरी करने की। I created another universe and founded paradise. For I... करने पड़े। ट्रेन में जाते। गर्मी लग रही है। Oh yeah, let's continue. सर्दी में पंखा चला रहा है। हाँ कहाँ रहता है? ठंड में क्या कह रहा? ठंड में पंखा चला रहा? हाँ। ठंड तो वहाँ है ना, यहाँ ठंड नहीं होती यार। आप कौन सी जगह पे? मुंबई। मुंबई में ठंड नहीं होती? ठंड नहीं होती इतनी। पूरा ठंड तो निकल जाती है। कितने लोग तो स्वेटर भी नहीं पहनते। ये भी सही है। I can't wait to see how this turns out. ठंड में भी भाई गर्मी तो होती। पसीने छूटे।
चलो यार मेन स्टोरी कंटिन्यू। I have high hopes for this journey. आवाज आ रहा ब्रो? आ रहा है ब्रो। लास्ट टाइम स्टोरी में हम ग्रैंड बाजार में जो फेस्टिवल हो रहा था वहां पे हमने रोक दी थी। ऐसे करेंगे कंटिन्यू। आगे चल के हमको प्रीमोस भी मिले, विश भी मिले। ओ ये मैंने ये वहां तक खेला है यार। एक है ना, बिल्डिंग के अंदर घुसते हैं और फिर छोटे छोटे मतलब चौकोर पत्थर से होते हैं, उनसे कूद कूद के ऊपर या नीचे जाना पड़ता है। पता हाँ नहीं हाँ कैसे। यस वहां तक खेला है। असेंशन क्वेस्ट होता। हाँ जो भी था, मैं भाई वहीं पे अटक गया। मतलब तुम कूद नहीं पा रहे थे या फिर फाइट नहीं कर पा रहे थे? हाँ अरे मेरे से वो जंप ही नहीं हो रहे थे, बार बार नीचे गिर रहा था मैं वहां से। पता नहीं क्या कैसे जंप करनी थी, बार बार नीचे गिर रहा था। मैंने लिटरली 2-3 घंटे दिए वहां पे, हुआ ही नहीं। मैं देखा भाड़ में से ये क्यों बड़ा साले। तुमने जीमेल से कर रखा था कि? अब यार मेरे को ये ध्यान नहीं है वो ऑनलाइन था ऑफलाइन था क्या था। You know it well. कल एक बंदा आया था वही चीज करवाने के लिए। Came out of the blue to support the event. उसमें करना क्या होता है? तू समझ गया ना कौन सी जगह की बात? हाँ हाँ मैं समझ गया। शुरुआत की है वो बिल्कुल गेम शुरू होता है। उसमें कुछ करना नहीं होता, मतलब एक तरह से वो ऐसा होता है कि वो टेस्ट करता है कि तुमने आउट वर्ल्ड में कितना सीख लिया है। जंप करना, क्लाइंब करना, उतना ही बस वो चेक करता है और कुछ नहीं। तो वो करना क्या होता है? वहाँ पे जंप करके जाना होता है ना। आगे जाते तो फाइट होती है। वो एंड ऑफ द रोड पे एक अरीना सा रहता है और उसमें फाइट होती है। It's another generally speaking, the most common selections are foods like rukashvama. So this wait, then what if the इसका कोई लाइफ हैक पड़ा है कि जैसे कि एक एक टैग डालना I hope पड़ता your है? wish comes true one day. ऐसा कुछ है कि एक बारी में ही कई सारा वो डल हाँ हाँ है ना। कैसे? YouTube पे सर्च करो YouTube टैग जनरेटर। ठीक है YouTube पे सर्च YouTube पे नहीं गूगल पे। Right? YouTube टैग जनरेटर। Sure sounds. That is precisely what we फिर need. उसमें वो तुम्हारा सिर्फ वीडियो का टाइटल मांगेगा, टाइटल दे देना, वो अपने आप बना के दे देगा। वहाँ से कॉपी करना है और टैग लिस्ट में पेस्ट कर देना। क्या दे रहा है, क्या मांग रहा है? उबला हुआ अंडा। अंडा मांग रहा है। Okay, one moment. Paimon wants to take a look too. Generally speaking, the moon signifies. It means. Wait a moment. Is he really looking it up? Oh, I remember now. It means illusion. Illusions and lies? Yes, but He's not even trying to. Naturally.
Oh, it's nothing. Guess that was still pretty. They say the Sub-Zerus festival was very lively a long, long time ago. Large flower carriages used to parade through the city. As they headed towards Port Ormos, people would throw flowers, candy, and liquor वो all बंदे का along मैंने the way. बोला कि मैं कर दूंगा, उसका लॉगिन आईडी भी दिया था उसने, आईडी पासवर्ड दिया, फिर जीमेल से उसने वेरिफिकेशन कोड भी दिया. Seen that spectacle. But if you बाद में ask बोलता है me, कि I'm sure Nilu's इन गेम dance at लॉगिन नहीं Sub-Zerus करना, would be तुमको just as जीमेल impressive. लॉगिन करना पड़ेगा सिस्टम पे. मैं किसी का भी जीमेल थोड़ी लॉगिन करता बैठूंगा. Attention! Soldiers, fall into formation if you want any Yalda can. It's a weird guy. His junior's छोड़ देना In the few चाहिए short उनको days it took to YouTube prepare पे, for the ऐसा कुछ Sub-Zerus समझ में नहीं festival, आ रहा है the क्या children चल have रहा all है। grown very fond of you. एक वीडियो डिलीट नहीं हो रही मेरे से The यार hallowed night of भाई flowers. कैसे It's an होगा honor that you know my शिकायत name. कौन सी नहीं हो रही? से ड्राफ्ट में चली गई एक Attention! साली In the name of Ferris, the Knight of draft Flowers, में I delete का commend option you नहीं है on ना। your contributions to the glorious Sub-Zerus festival. डिसमिस All right, little Delete soldiers, submit take your Yal. Yes, Knight! It's all thanks to Miss Dunyarzad. As are we. Whichever. Ooh. And there's also. Huh? Onikabu to. Dunyarzad? You tried them before? It's alright. I also believe. Great! These boxes of candy are numbered 1 to 5 from left to right. Which one do you want? Attention! That's unfortunate. Oh, Paimon thought you survived so many. The Sunsetia flavored candy was in box number 4. How about this? The most important thing is that everyone has a good time at the festival. So please, take both boxes. Really? It's Night of Flowers, not Night of Candies. Paimon really wilted the carriageless night of flowers. They all basically sound. Oh, actually, can you come with me to get it? Dunyarzad, you एक मिनट गाइस, फोन आ रहा है. Water comes in many flavors to the discerning palate. Mondstadt's water is crisp and pure, while water from Liyue has an enduring aftertaste. In Inazuma, the water possesses a depth of flavor unlike any other. Sumeru's water, meanwhile, has a rich and complex flavor profile, but it must be savored patiently to fully appreciate it. We're too late. I know, right? Oh, that most certainly is. We're in luck. She's walking right into our clutches. Those Eremites don't look like they're up to any good. Who are you? I don't believe the Homayanis hired you. That's right. We haven't received any of their Mora, but I wonder how much the Homayanis would shell out to get you back. They're a gang of kidnappers! Traveler, hurry and protect Dunyarzad! हेलो चंदर, कौन ऑन एग्जाइल्स क्या? Hey,
Did you scumbags even consider that the Homiyanis might Hold have on, hired a exiles. merc that outclasses you? Dia! Dia the Flame Main! No wonder we mercs haven't heard anything about you for so long. You sold your unruly mane to the highest bidder. Don't speak so disrespectfully. My family started working with her as gratitude for her past kindness to us. Don't worry about it, my lady. Just some friendly banter between mercs. One punch and those rabid dogs will expose themselves for what they really... Aren't your claws all dull by now? Don't get too cocky! Traveler, take Miss Dunyarzad to a safe location. No! We're gonna stay and help! There's too many of them! Please be careful. Don't waste your time worrying about me. This is my job. Look out for yourself. After I've wiped the floor with them. Finally birthday I can भागना है मुझे what the fuck Dunyarzad, are you okay? You look a little pale. Yeah, I'm fine. My body always reacts like this whenever You sure you're... I'll be fine after some rest. I'm more worried about Dia. After all, none of the... Yeah! Don't worry. My lady, traveler, found ya. Dia! You took care of them. Any more of them? Or rather, did anyone follow you? Dia, your arm. Oh, this? I'm fine. It's just a scratch. Normally, they wouldn't have been able to land a hit on me at all, but I'm still getting used to this new greatsword. Please, let me take a closer look. Come on, it's nothing. Us mercs aren't as fragile as you think. Hold on, you said something about a new greatsword. What happened to the one? About that. Well, I sold it, because I was low on Mora. Stuff like this happens every now and then. It can't be. The anonymous donation that was used for the venue's final round of preparation. Hey, Miss Dunyarzad, I wasn't trying to make you cry, and I'm not gonna lose my commission because I made my... Okay, making your employer cry won't affect your commission, but selling your weapon without permission and getting hurt? You're so... Thank you very much, Dia. Don't be like... Moment है भाई, moment. My lady, your condition... Truly, I'm sorry for the... Are you feeling better, Dunyarzad? Yes, much. I didn't realize you were concerned about it. I guess I shouldn't continue to keep it a secret. I was actually born with Elazar. It's terminal now. Can't believe it's Elazar. Oh, What? you've already heard of Elazar. In that case, you probably know about its severity. Sumero's current medical advancements still haven't been able to find a cure. The disease's progression can only be delayed through environmental therapy. Dunyarzad. There's no need to be sad. I've always lived with Elazar and I came to terms with it a long time compared to the simple fact that I'm afflicted with this. Its effects on my life have been much more painful. I know that my family loves me dearly. They've done all they can to provide the best environment for me so that I can live for that much longer. However, I know I will one... Did you know? Before I ran away from home this time, the world outside of my home didn't even know that I existed. Since I was a child, all I could do was sit on my bed and stare at everything outside. I'm sure my family's worried and disappointed in me for running away, but I just didn't want to have any regrets. I wanted to meet other people. To me, there's nothing, not to mention the incredible time spent preparing for the festival. The joy this way, when my final day does arrive, it will be less sorrowful. At the very least, many people will remember that I once existed in this world, right? As long as you don't forget Paimon.
Paimon also won't forget about you. Thank you two so much. I apologize for the depressing conversation. This is, to be honest, Lesser Lord Kusanali gave me the courage to do all of this. If it weren't for her encouragement, I wouldn't have taken that first step. Thanks. There will always be frustrations in life, but I know that the point of living is not to leave behind any regrets. Oh, right. Isn't it almost time? Huh? Isn't the Dance of Sub-Zeros about to begin? It's the part of the festival that Nilu will recreate that legendary scene with her most splendid dancing. हाँ, And सही the है भाई. Sub-Zeros festival will conclude. चलो and भाई नाच with देखेंगे that, नाचते. my wish will also. Then what are we waiting for? Let's go to the... Yeah. Go downstairs. Were you not aware that the law prohibits this type of performance from taking place without prior permission? Over there! Someone's yelling at Nilu! I think I just saw the Academia's Grand Sage. What? But the Dance of Sub-Zeros is one of the key parts of the Sub-Zeros festival. If the Sub-Zeros festival. The law also prohibits the private hosting of large-scale religious festivals. Only the Academia can host such an event. If you continue to resist, we will have to order an investigation into every single event organizer. The Grand Sage has already granted you much leniency. I advise that you exercise tact. How did they... The Academia was originally responsible for the Sub-Zeros festival, but they failed this responsibility for many years. I need to speak with them. This is a hard pill to swallow, but you're right. Art, dance. Aren't you ashamed of pursuing such frivolous and meaningless activities in this land of knowledge and reason? Our Archon created the utopia that is Sumeru City for all scholars who sought validity, verity, and truth, while people like you wish to defile it. No. I believe that our Archon never rejected the arts. Even the goddess of flowers dedicated a dance to her. With your lack of intellectual credentials, I do not believe you are qualified to debate with me. What you should be doing is finding workers to tear down this ridiculous eyesore. When we return, have the scribe draft an ordinance before the next Garbaha Day that prohibits public art performances. We will announce it to the public later via the Akasha. कुछ समझता नहीं रहा. I will inform him when I return. The Sub-Zeros festival. Hello? Go celebrate the birth of that god to your heart's content. Nilu, are you okay? Oh, Dunyarzad. You all saw that just now? The Grand Sage ordered us to stop the performance. Yeah. Let's go somewhere the Academia can't find us and perform there. But how do we let everyone know? And what? Or we could get people to block them off so they can't interrupt the performance. No. They just threatened to investigate the organizers. Nilu, it's all right. But you've been looking forward to the Dance of Sub-Zeros so much. And I know how important this festival is to you. It's okay. Seeing you care this much about it would be too risky to continue the Sub-Zeros festival at this point. I don't want to get everyone in trouble. If you say so. But you can sneak out for the next Sub-Zeros festival, right? We'll make sure the next one is a smashing success. The next one. Yes. Okay, it's a promise. It will be a smashing success. Paimon can't believe this is how things turned out. Those heartless geezers. We try to think of another. It really is okay. Supposed to come to an unfortunately abrupt. A lot happened today. It's
shame. Nilo and Dunyarzad promised to make the next yeah. All connections have been secured to construct the most stable framework possible. The project has entered its most critical phase. Begin to perform. Gonna be late. It's all because of it. We're gonna be late! It's all because you wouldn't get out of bed! We should go meet Dunyarzad right away! Good morning, Dunyarzad. Sorry we're late. Not at all. You seem kinda tired. Did you— I'm doing well. There's no need to worry. Shall we go? Let's start. Sure! कुछ तो खुराफाती चल रहा है इसके दिमाग में. Ooh, they're selling food over that way. Let's go take a look. हाथ में चल यार, ऐसे अलग अलग नहीं चलते. ये हुई ना तेरी भैंस की यार. मी थाई ब्रो, कैसे हो? मैं बढ़िया हूँ यार, तुम बताओ तुम कैसे हो? अरे माइक हिल गया. This is a stall offering foods from the Huft Mewa feast. You are quite well informed, miss. I thought most people nowadays wouldn't know. They're all plants. Oh, Paimon's a little actually, what is the Haft Mewa feast you mentioned just now? It's one of the Sub-Zerus festival's traditions. People used to set their tables with 7 different foods to symbolize the 7 virtues of the Dendro Archon. Remnants appear to be in the form of the moon. Give me a. Really? Paimon thought it looked like some kind of food. The moon signifies... It's escaping me for now. Is he really looking it up in a... Oh, right. It means illusions and lies. But if you trust your intuition and overcome your fears, the sun will surely rise. ये चीज तो हो चुका है, ये फिर से कैसे आ रहा है बे? Understood. I'll keep that in mind. Oh, it's nothing. I'm just learning as I go. Guess that was still pretty interesting. Okay, on to the next stop. So, where to next? भैंस की टेंट ये तो हो चुका था, फिर ये कैसे वापस आया? मैं तो गेम एक टाइम पे चूतिया है, मैं नहीं हूँ यार. All right, soldiers. Now that you have your Yalda candies, don't forget your loyalty to Lesser Lord Kusanat. Yes, Knight Ferris! What's going on? Ferris, the Knight of Flowers, is another Bro, पीछे Sub-Zerus का I festival mean icon and one immensely popular मॉन्स्टर और children. लियो और इनाजुमा का स्टोरी क्वेस्ट It's all thanks कर to लिया Miss है आपने? Dunyarzad's sponsorship. Yes, The bro. children can... Oh, do you want some अनफॉर्चुनेटली Yalda मैंने candies? कुछ क्वेस्ट थोड़े से ऑफलाइन कर दिए थे गलती से, जो मैं स्ट्रीम नहीं कर पाया. And there's also Lizard बट Tail. एज मच एज आई रिमेम्बर मैंने इनाजुमा से स्टार्ट किया है. Great. इनाजुमा का These सारे boxes of मिल जाएंगे candy are आपको. numbered 1 to 5 from left to right. Which one do you want? Ah, excellently chosen. Number 4 is indeed Sunsetia. Paimon bet you had incredible luck, and Paimon was right! कुछ तो गड़बड़ है. How's that possible? It's obviously random. Why do I keep having the sense of deja vu? Maybe we didn't sleep very well last night. Or maybe we slept too much. Or maybe we have came back in the time. Oh, sure. Where are you going?
द फ्लेवर ऑफ डेजा वू। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है ये ऊपर जाके लड़ने की तैयारी कर रहा है कि कुछ तो गड़बड़ क्या करने कुछ। ओ भाई तेरे घर के अंदर टाइम ट्रैवल की मशीन है क्या? मुझे फिर से पीछे कर दिया टाइम में। और क्या? एक मिनट तुम लोग गाइस वेट करना जरा, मैं फोन कर लूँ एक। A feeling of deja vu? Oh, Paimon knows what that is. It's when you feel like you've already experienced whatever is going on. In that case, Paimon also felt some. So, why'd you run here in such a hurry? So that's it. You're intentionally doing. Welcome, you two. Are you here for lunch? What would you like to eat? Got it. You don't look like... Charcoal baked Angelina cake. Isn't it that burned thing? Oh, Paimon understands. That thing? Are you really gonna eat it? Isn't this going a bit too far? How was it? The look on your face is telling Paimon that it tasted awful. Then, you mean... That's impossible! We were just talking about how gross it looked! So, would this be a case of taste bud deja vu? Paimon also, Hey, Dinyarzad is sitting by herself Yes, on I the am bench back. over there. What a coincidence, Dinyarzad. We meet at... Oh, I ran into some kidnappers just now. Thankfully, Dia Thankfully, came to Dia my came to my rescue. rescue. I started to... Kidnappers? I'm okay. Dia's arm got scratched. That's a big relief. Um, But, Dinyarzad... Not at all. I've always been like this. Excessive physical exertion or strong emotions tend to aggravate my illness. Besides, no matter how amazing today may be, it is but a single day. After however many more days, my time will come to an end. Paimon doesn't quite follow you, and Paimon feels like something's really got you down right now. It really is fine. I don't mind. Have you noticed? Huh? Did some... Dinyarzad, have you ever felt deja vu? You know, like when you've already experienced something that's happening right... Deja vu? No. But my days have been the same for years now. Even if I were feeling deja vu, I suppose I would already be used to it. Oh, Paimon sees. Then, is it only the two of us? It's almost time. Huh? Time for what? Nilu's Dance of Sub-Zeros is about to begin. और फिर से Goodbye. With your lack of intellectual credentials, I do not believe. When we return, have the scribe draft an ordinance before the next Nyagarbha day. Understood. I will inform him. The Sub-Zero's festival. पोटा आजा वीसी, आजा शिकारी के वीसी बैठे। Are
Dunyarzad. भिखारी तो भाई सो गया लगता है There's बैठा nothing we बैठे। can do about it. नहीं बैठा हूँ। But you've been really looking for. It truly is unfortunate, but I don't want to cause trouble for anyone. Didn't the Grand say True, but the next festival? wait. No. Paimon can't believe what those heartless geezers did! हेलो हैरी भाई। क्या हाल चाल है? सेक्सी भाई, बिल्कुल सेक्सी। क्या जट्टी, तू अभी तक जेंशिन में अटका है। मैं वेलो खेल रहा है। मैं नहीं खेलूंगा वो घटिया गेम। न्यूरो कहाँ है? न्यूरो दिख नहीं रहा है। न्यूरो की बत्ती गई। उसकी भी गई, मेरी तो अभी आई बिल्कुल भाई सवेरे से। मेरी आ गई। हाँ। शायद उसकी भी आ जाए। थोड़ा टाइम में बस आते। अरे पड़ोसी हैं यार। भाई मेरा तो माउस बीच वाला स्क्रॉल करने वाला खराब है। क्या बताऊं? स्क्रॉल करो तो डिस्कॉर्ड के सारे लोगो एक इधर से उधर हो रहे हैं। Why does Paimon feel so tired? Anyway. फिर से वही गड़बड़ होने वाली है। Not at all. जेंशिन कितना खेलेगा? जय जीटी बस कर दे, मेरे आँख से आंसू आ जाएंगे। अरे मैं स्टोरी तो खत्म करूँ सालो, तुम तो खत्म करके बैठे हो। कब खत्म करी? This all feels what a strong sense of deja vu. लोमड़ी के डेजा वो नहीं है, हो रहा है वापस बार बार। तो ये उसकी सुमेरु कर रहा है ना? हाँ। हाँ तो बहुत लंबी स्टोरी है। कब कहाँ तक पहुँचा? चॉकलेट वाले के पास तीसरी बार पहुँच। तीसरी बार अभी होगा, 2-3 बार और होगा। ये बहन का भाई है क्या 2-3 बार? हाँ अभी फिर पाइमन रोने वाला सीन खत्म हो गया जो पाइमन रोती है। भाई वो सीन देख के मुझे बहुत रोना आया था क्योंकि मैंने ये पूरी स्टोरी बिल्कुल सही से देखी थी। No problem. These boxes of candy are numbered 1 to 5 from left to right. Which one do you want? Number 4, number 4, number 4, number 4, number 4. Oh, I like your confidence. No hesitation at all. अभी बाद मिलेगा। बहुत ज्यादा ट्रेंड चल रहा है यार। अभी मैं इंस्टाग्राम ही देख रहा था, बहुत ज्यादा रील देख लिया यार आज। Number 3 is lavender melon. Paimon's not really interested. Oh. जय जट्टी। How did you know? Wait. How did you know? तुमको पता है? Don't tell me that you already knew which flavor was in each box. What? हाँ। तुमको पता है एक चीज? क्या? That couldn't have been luck. कि मेरी How is this तुरीना possible? 50k I प्लस packed all डैमेज दे those रही है। boxes this morning and they've been sealed ever since. You couldn't have known beforehand. क्या 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 कह रहा है? 50k प्लस डैमेज दे रही है तुरीना। कैसे? बैनेट के साथ। कैसे? बैनेट के के साथ। ये कैसे हो सकता है? मेरी क्यों नहीं दे रही? तो 63 जा रही है। मेरी क्यों नहीं दे रही? मैंने वो हाइड्रो डैमेज बोनस लगा लिया ना। अच्छा मेरा बोला हुआ मान गया। Mind reading? X-ray vision? Some kind of magic. Tell us what's going on. Since when did you get superpowers? मेरे तो आयात तो निकालने से पहले सब मर जा रहे हैं। नहीं डा, वो गायब। तेरी भैंस की टैट रुक जाते। नहीं कंट्रोल, बच्ची है वो, बच्ची 2000 साल पुरानी नहीं है। नहीं था, क्या बात कर रहे हो? Hey, where are you going? लोली है, लोली मान सकता हूँ, बच्ची नहीं है वो। हाँ हाँ। What's going on? Did you see something? नहीं डा, पकड़ बच्चा पकड़। नहीं था, लग रहा है आपको एक अच्छी वो फोटो तो पक्का जा रही है, पकड़ इसकी पास। अल्लाह मेरा सबसे फास्ट कैरेक्टर है ही नहीं मेरे में कोई जो भग सके जोर का। अब कहाँ भागी? वो बकरी की पकड़ तेरी। अभी जा रहा है, कितना दौड़ाएगा? बोलो द फैमिलियर फिगर।
फिगर तो तब था जब वो बड़ी कंट्रोल फिगर तो जब आ जब हाइड्रो ड्रैगन What are you looking for? ये बात है 1000 साल पुरानी से मुदु की जब नहीदा बिल्कुल कमसन कली थी यस ओह ये ए फिर से पीछे आ गई अभी नहीदा मिली होगी 2-3 बार तो अभी तो दिखी ना चालू हुई है हाँ दिखी होगी वो छोटी चिरकुट सी तो होती है और ट्रैवलर बच्चे दे दिया मिल गई नहीदा मिल गई नहीदा खुद नहीं मालूम होता है कि वो खुद फंसी है क्यों हो गई थी इसलिए तो कहती है तेरी याददाश्त ही भूल जाती है नहीदा तो शर्म आनी चाहिए नहीदा को तो डूब के मर जाना चाहिए ऐसा नहीं क्या यस मेरी ये एल्फ है क्या एल्फ वो जो लंबे कानों वालों को और क्या बोलते Isn't that Junior's head? What's happening एल्फ ही here? बोलते Why are हैं there two Junior's heads? प्लेस द फूड सप्लाई You already know that this isn't your first Sub-Zero's festival, don't you? I'm sure you already know how to use this. Yeah? A knowledge capsule? Where did he get it? You should use it too, Paimon. You know Paimon? Let's use it together. Well, this seems kinda sketchy, but Paimon feels like this is what... What the? So many days worth of memories. This is our 20th time at the Sub-Zero's festival? 20वां टाइम है वाह No. The 30th 40th क्या 40th? Just how many times have we been to the Sub-Zero's? Have we been trapped in a single day? If it weren't for you, we wouldn't have even realized. What the heck was inside that knowledge capsule? Your memories are still scrambled? Try your best to remember. This isn't the first time we've met, and I answered that question a long time ago. है तो तू वापस नहीं बोल सकती Let Paimon think. Normal temperature. Oh, it's coming back. Meeting you was the real catalyst for restoring our memories, and the knowledge capsule. What about everyone else? Why are you only helping the two of us? Your sense of deja vu is stronger than everyone else's, yes? As for an explanation, you two received the blessing of Dendro. And you also have special sensitive constitutions. Valorant It was खेलने as वाला if a कोई है single नहीं। sheet of paper was separating those memories from your consciousness. A familiar question. I अकेले think में this is random the player 7th मिलते हैं time you asked that. फिर वो गाली देते As you हैं can see, मजा she नहीं isn't doing well. You probably sensed it too. The Dunyarzad you were just with is different from the first बेटी Dunyarzad गद्दारी you कर रहा met. है That first e-sports Dunyarzad का प्लेयर है is भाई in front of जेटी you right now, and पर खेल ही नहीं रहा है she doesn't have a lot of time left. Looks like you're almost done sorting out your brain. Oh yeah, I'm Nahida. I am Nahida and no you introduce yourself Good, you passed the test. What's happening? You can awaken our memories, and you seem like you know what's going on. मेरे पपियों Please don't tell मेरे Paimon प्यारे Everything in this world runs in a loop. This cycle is called the samsara. Samsara Me and everyone else are all stuck inside the one-day samsara. As for the truth, that's on you to find out. If you were told the truth instead of discovering it yourselves, it would literally blow your minds. I don't know how you'd be after that. I can only give you surface-level help, like bits of information and subtle hints. For the rest of the time, I'll be doing all I can to slow down Dunyarzad's illness.
She looks like she isn't doing well at all. Her illness gets worse after each Sub-Zero's festival. If we can break out of the samsara, I might be able to save her. होता कहाँ है? But as things are right now, she's just a small bird in the sky that's about to lose its last feathers. All I can do is raise a gale to delay her fall. You sure love to use weird analogies. Analogies are wonderful tools. They let you use existing knowledge to understand unfamiliar things. Okay, so, with what you know so far, what do you think the truth is? इसकी माँ की ये घटिया चीज है भाई, घटिया। Sub-Zero Festival Samsara. We've already experienced the Sub-Zero's festival many times. Associate. Deja vu. That should be it. Time loop. The flow of time is endlessly cycling. The Grand Sage's speech. A time loop. Given similarly wrong answer. Still the wrong answer? Paimon thought that made a lot of sense. A simple time loop can't explain some of the phenomena. You two are still missing a lot of information. The Sub-Zero's festival is happening every day, but that doesn't mean we can waste an infinite amount of them. Hurry and find the truth before today's festival ends. Okay. Let's think about our current situation. To save Dunyarzad, we have to escape the samsara of the Sub-Zero's festival. And to do that, we need to figure out what's happening. The Nahida rejected the idea of a time loop, so when Paimon's memories say that we've already done this many times, but let's go talk to people again. It's more productive than sitting here and scratching our heads. Hey, it's you guys. I see. Did you come back to buy something? I guarantee the... Huh? What kind of... Didn't you know... He actually has a point. Is this a dream? Anyway, Finally, मैंने कर लिया daily commission. रोज मैं daily commission करने आता हूँ. Oh, it's you two. Was my divination so accurate that you felt compelled to compliment me in person? Ooh, I knew it! I told you, the god's divination is highly accurate. You just hadn't fully understood its significance yet. You're really excited about this, huh? Help you better understand it? So, you're admitting that you don't have a clue? Anyway, what kind of situation did you get into? Huh? Hold on a second. I thought you guys just lost your wallet. What you just said. Are you serious? Paimon knew you weren't going to believe it. Marvelous. Truly marvelous. I believe you. Recall the interpretation of your divination. The moon, illusions, and lies. It really... When you say it like that, the divination does sound like it's related to what's going on. I believe that the Archon's revelations are never more than vague hints. Anything more specific is beyond the reach of mere mortals. The book only says, if you trust your instincts and overcome your fears, the sun will surely rise. So that's how it is. Looks like fortune-telling is just fortune-telling. We haven't made any progress. Who else can we talk to? Paimon remembers that we tried talking to her a couple of times, but she always thinks we're playing pranks on her. You think she'll brush us off again? Yeah, if we... At this time...
कहाँ चढ़ रहा है खंबा? I'm fine, my lady. It's just a scratch. Perfect timing. Both of you are here. Paimon, traveler, you came at just the right time. Listen, there was a dangerous Huh? You saw? Then why didn't you jump in earlier? If someone was protecting Miss Dunyarzad, I could have went all out. Anyway, can you... You want the traveler to take Dunyarzad somewhere to rest up while you check to see if there's still any kidnappers around. How did you know what I was going to say? We need to say something convincing. Dia sold her greatsword to raise additional funds. And then she was injured because she wasn't used to her new weapon. Dia sold her greatsword. The moon, illusions, and lies. People in Sumeru don't dream. My mind feels exhausted, even though I haven't done too much thinking. That doesn't sound right. I need to care. That doesn't sound right. That doesn't sound. Tell her, traveler. Shouted, yeah. I didn't tell anyone about that. Including Miss Dunyarzad. You couldn't have known. And just now, you literally took the words right out of my mouth. What's going on? All right, so this is the situation. It's kinda hard to believe what you just told me. First, let me make something clear. Most of us desert dwellers might not be the scholarly type, but we do have basic common sense. She's quieter than usual. Uninterested in anything and... Yeah, she isn't the same as before, but her parents said that this is how she was like at first. Huh? At first? I don't quite understand what you're all talking about. I'll go rest on the bench over there. My lady, are you angry? All right, I'll give you the benefit of the doubt since you knew about my greatsword. Let's make this a quick trip. Miss Dunyarzad isn't... मेरी को स्टोरी तो बढ़िया सेक्सी चल क्या नहीं था क्या आवाज है देखी क्या ही बात है मजा आंदी लाइफ Nahida, we brought a friend. कल मैं होता हुआ काम कर रहा था I told you that it won't help to bring anyone here. We just wanted her to see the real Dunyarzad. The real Dunyarzad? Where and who are you? Huh? I told you that you two are special. Other people can't see me or Miss Dunyarzad. Hold on. Over there. Is that? Wow. How perceptive. Does she have invisible antennae? Miss Dunyarzad, she's lying down here, isn't she? How's she doing? Her condition's really bad, and she's basically in a coma. How did you know she was— I can sense her aura. There are also lingering feelings of something like regret or disappointment. Do you believe us now? The Sub-Zero's festival has been repeating itself. So, you think the sages are behind this? Yeah, they've always been against us. Wouldn't surprise me if they're using the Akasha to intentionally repeat the Sub-Zero's festival as a sick joke. You have a point. Aside from the Dendro Archon,
The Academia's sages are the only ones in Sumeru who could pull off something like... Maybe there's more to the Akasha than we know. Right! Didn't you awaken our memories using something that looked like a knowledge capsule? That means you must know something about... The Akasha relies on the power of a gnosis to operate, as it is the manifestation of the God of Wisdom's power. It compiles the wisdom of the entire populace, and it grants... A gnosis could do that? No wonder the Akasha is so magical. It's being powered by the gnosis of Sumeru's Archon. So, this Nahida you mentioned. She said, and Paimon quotes, "The Akasha relies on the power of a gnosis to operate, as it is the manifestation of the God of Wisdom's power. It compiles the wisdom of the entire populace, and it grants knowledge to the people." Compiles the wisdom of the entire populace and grants knowledge to the people. Wait. I get the grants knowledge part. That's what people have always used the Akasha for. But compiling the entire populace's wisdom? How does that work? Did she mean that the sages enter new knowledge into the Akasha? Oh yeah, that sounds about right. What do you... Okay, Nahida said the Akasha relies on the power of a gnosis to operate, as it is the manifestation of the God of Wisdom's power. It compiles the wisdom of the entire populace, and it grants knowledge to the people. My mind feels exhausted, even though I have... You mean the Akasha is causing our mental fatigue? Huh. Now that I think about it, my head's been feeling unusually heavy. When the desert dwellers set off on their quest for knowledge, a sage once said, "Knowledge always comes at a price." Compiling the entire country's knowledge. You think the Akasha pulled a 180 and is extracting information from us? Who knows? The Akasha can put knowledge into our heads, so समझ ही नहीं है. who's to say that it can't also Alt poke tap कर around दी. in there? We don't know any specifics. What's the point of doing something Sorry, like that? Expo, sorry. मैं बोला बोल क्यों Just नहीं रहा think इतना about टाइम it. से वो. If you could combine the knowledge of every single person in Sumeru, then you can basically turn Sumeru City into a single massive brain. This hive mind could make breakthroughs in problems that even the smartest geniuses can't crack. An excellent deduction. And the analogy comparing Sumeru City to a massive brain? I love it. In that case, we should take off our Akasha terminals right away. Maybe that'll solve this problem. Worth a shot. Yeah, I was only wearing this for show in the first place. Didn't expect the sages to cook up such a conspiracy. Oh. Mark my words. When this is over, I'm getting evidence and exposing this whole... Everyone removes the Akasha terminal. How does everyone feel? Huh? What is it? I feel like at the end of every day, there's always the sound of a beep. Oh, that! Paimon knows what you're talking about. It's a single soft beep that sounds like it's coming from the Akasha terminal. The sound of a beep. Could it be a prompt tone for when the Akasha is operating? That's probably an important clue. Hello, We Demon. weren't Welcome to the using stream. our my friend. terminals, but we heard a beep anyway. I beep, beep, I beep. Traveler, did you hear that? I heard it too. Our ears aren't messing with us. There was definitely a beep, but it Sounds sounded like like it. it was coming from inside my... We took off our Akasha terminals.
Okay. Its runtime has exceeded its expected length. At this rate, there may be casualties. But we cannot lose all of our progress. इसकी चाका माका टाका नाका ने फिर हमको टाइम में पीछे भेजने की भेज दिया है ये Paimon remembers everything! Good. You adapted quickly this time. We definitely took off our Akashi terminals last night. still heard the beep of what's that? Why is that? Have been implanted with another form of terminal. But now we can at least confirm one thing. और कौन है? Akasha definitely has something to do with और whatever. है शिकारी भी है और हैरी पुत्र भी है लेकिन हैरी ने डिफेंड कर लिया Why would the Akasha go this far if all it wants is everybody's wisdom? It's extremely difficult for lab rats in an experiment to understand why they're being treated the way they are. If we're lab rats, then what are you? Hi. Nahida, you've never told us anything about yourself. Yes, I'm the moon. I guess I'm the moon. The moon? Wasn't That's that the the result result of of our our divination? Anyway, knowing who I am won't help you get closer to the truth. So you should focus on other things. हेलो शिकारी Don't get भाई distracted and miss टीवन any हेलो clues. कह रहा है Okay then. शिकारी भाई को डीवन हेलो कह रहा है पर लगता है शिकारी भाई सो गए If reading the time correctly, those kidnappers should be showing up soon. टाइम पीछे Ah, there you are. I've already taken care of those kidnappers. My lady, did you get hurt? on something Dia! What's wrong? Why are you both gawking at me like that? You didn't get hurt? Huh? What do you mean this time? Why are you so surprised that I managed to get out unscathed? Those kids were amateurs. वर्ल्ड क्वेस्ट कर रहे हो नहीं ये है आर्कॉन क्वेस्ट Shh! How did you know about my great sword? I haven't told anyone about it. Please. So Dia's lost her memories after all. Did anything Anything strange? You already know that I got a new great sword. If I had to say something, it's weird how such a new weapon could feel so familiar. It's as if I've already used it to fight a countless number of battles. You're saying that although you don't remember using it, your body feels like... That's right. Both mercenaries and warriors heavily rely on muscle memory. Only knowing the theory of battle won't get you anywhere. oh Traveler, yeah what do you think? could it be because we removed the Akash Yeah, Paimon's feeling really hopeful. Oh, you're right! Earlier in the Samsara, something like this would have never happened. no for sure I have no clue what you two are talking about. So you want us to take Dunyarzad somewhere else to rest while you check if there are still more kidnappers around? How did you know what I was gonna say? Can you read Mach? Forget it. ये वही चीज हुई वापस Whew, it's finally nighttime. Aside from Dia not getting injured, everything seems to have stayed... Listen, Nahida, we found out that Dia got out just fine today, even though she got injured every other time. Do you think the Samsara has been broken? Have we saved... Really? Good job on all that progress. Get some good sleep tonight. Hey, what kind of an... Tomorrow will come. Everyone assumes this is common knowledge, but the only way you can know that for sure is if you experience tomorrow. How many todays has it been? Is it possible that today will be followed by yesterday? Does tomorrow truly exist as anything beyond a made-up concept? It's even possible that this entire world is a lie, and the history of the whole world has just been one endless Sub-Zero's festival. Okay, no more.
हाँ भाई मेरा खुद का दिमाग का कचरा हो गया भाई इसने क्या बोला ये अभी That's why it makes no sense to waste your energy thinking about things you will learn tomorrow. Get some good rest. You know, use the bathroom and flush your anxiety dookie away. Huh? Hold on, what did you just say? Huh? People always say they feel a sense of relief after they take a duk-duk. That's why I suggested you could try that. Is that so It's so strange and so against common sense that Paimon's at a loss for words. You were sounding... Yeah. Even though it's happy and lively at the Sub-Zero's festival... Continue the harvest. Compared to what we stand to achieve, these sacrifices are trivial. ये एक नई लाइन थी जो मैंने अभी सुनी We're still in the same day. Nahida, you already knew last night that we didn't break out of the samsara? Why did... Would there have been a point? You would have spent the night with new worries, with tomorrow still out of reach. In that case, you might as well rest within that brief moment of hope. An opportunity like that doesn't come by often, and I thought it might help you clear your minds. Paimon thought that Duke did that! Whatever. Guess you were looking out for us after all. Of course. In the time we've been together, you two have been everything to me. Paimon's flattered and everything, but maybe you're taking things a little... What I mean is, even though I had asked you to solve this puzzle, you two are still the only ones who can see me and sense my presence. Yeah? In other words, if you weren't here, I may as well not exist. That's why you two have been everything to me. Get it? Nahida's talking about confusing stuff again. Anyway, that's enough chit-chat. So, Traveler, did the new clues yesterday help you gain a new understanding of the situation? Huh? Why are you scrapping your previous theory? I was fighting happening. Oh yeah, you're right. Gosh, how did we not notice that? In a simple time loop. So, what's your new hypothesis? The Akasha The beep is a prompt tone for Akasha operations. We still hear it every night, even though we removed our Akasha terminals. The beep is a Okay, Nahida said the Akasha relies on the power of a gnosis to operate, as it is the manifestation of the God of Wisdom's power. It compiles the wisdom of the entire populace, and it grants knowledge to the people. We've already experienced the Sub-Zero's festival many times, and कितने कमा लेते हो seems to be in a perpetual samsara. बैगन The moon, illusions, and lies. What do they all mean? Moon, जो कि है नहीं रहा हमारे सामने. Illusions, जो हमारे साथ हो ही रहे हैं. जो हमारा चांद है वो खुद एक illusion है. और लाए, अरे मैं क्यों दिमाग का भरोसा कर रहा हूँ? ये तो मुझे खुद नहीं पल्ले पड़ रहा. Mercenaries rely heavily on muscle memory, and Dia was able to use her experiences to avoid injury in later samsara cycles. Yes, यानी कि muscle memories पे हम कर सकते हैं. Okay. I can't. Please select another text entirely to trigger associate. Okay, एक मिनट. मसल मेमोरी हो गया. बैगन तक, हाँ बैगन तक. If all our memories of a day are erased at the end of that day, then we would unwittingly relive the same day again and again. If all our mercenaries rely Okay, Nahida said we've already the moon. The beep is a
We aren't in a time loop. The memories are being erased at the end of each. Oh, then the beep we hear every night could just be indicating the deletion of our memories. That's why when we wake up, everyone thinks the Sub-Zero's festival hasn't happened yet. It's already the next day, but everyone still thinks it's the day before. But Yes. muscle memory can't be erased. That's why Dia has been getting better at using her greatsword. Now everything makes sense. A brilliant deduction. Nahida, tell us if we're right or wrong. To put it simply, it's as if you've mistaken a pyro crystal fly for a firefly in the night. You lost sight of its true nature because you focused too much on your perception that it glows. That isn't simple at मुझे कुछ all. पढ़ने नहीं पड़ा इसने क्या बोला. Why don't you go talk to Miss Dia again? You might learn something new. Right. She did help us find our latest clue after all. Finally भाई quest completed. मुझे नहीं पता हुआ कि नहीं. ये दिमाग का दही कर चुका. यूरो कह रहा था कि भाई एक पॉइंट आएगा जिसमें ऐसा लगेगा कि होगा ही नहीं. अरे इजी है क्या? यूरो को बताओ भाई इजी है क्या? ये छोटे मोटे क्वेस्ट ऐसे होते हैं भाई. There you are. Really took me a while to find you. As expected, Dia also didn't get hurt today. Get hurt? Why would I? Don't underestimate. Well, you're still getting used to your new grade. Huh. Truth be told, I also think it's pretty strange. It just suddenly felt so familiar in my hands and... wait a second! How did you know I got a new greatsword to begin with? I didn't tell anyone about it. Traveler, could you explain the situation to her today? Paimon's gotten a little sick of doing it. Oh, that works. What happened to you guys while I was gone? Did you get brainwashed by some cult? Don't think too hard about it. Just take what we're saying at face. All right then, let me get this straight. You're telling me that my body's already gotten used to this greatsword, but my brain just doesn't remember it? Yes, your memory's being erased every day. Then I'd have to disagree. That's impossible. Oh? Why do you think that? If we've actually been reliving the Sub-Zero's festival day after day, then what happened to the things we used, the money we spent, the food we ate? Common sense says my wallet should have emptied itself a long time ago. There's no way I wouldn't have noticed that. Biggest way behind this is the ये गड़बड़ है. ये चीज तो नहीं बदली यार. ये कैसे? लाइक रिसोर्सेज यानी कि पैसे गए. नहीं मैं सिर्फ मसल मेमोरी बढ़ गई लेकिन. Right. They could use the Akasha to record what everyone did that day, and then use the city's resources to replenish everything. It's not very likely, but it's also not impossible. No, it is impossible. I've got proof. You have proof? Where? You two are surprisingly serious about this nonsensical discussion. Fine, I'll play along for a little longer. Come with me, Miss Dunyarzad. Please come along as well. I still can't guarantee that this area is safe. Paimon can't believe it's Dia who wants to show us something this time. 2 days ago, we were the ones taking her to see Dunyarzad. This is it. Huh? This is a wooden training dummy. What if... See those marks on the dummy? Those are the result of several days' worth of practice. Let's say the sages didn't replace it every day. Shouldn't it be hacked to pieces by now? That's true, but what if they did? Then the sages would have had to reproduce every mark I left during previous training sessions. I'm a professional fighter. My martial school has always emphasized the importance of refined control. The force, angle, and entry point of each strike is calculated and deliberate. That's why I remember every mark on the dummy, as well as my state of mind as I made each strike. It's just as they say, each swordsman has their own unique style, and even the same swordsman can't make the same cut twice.
It would be impossible to copy these marks. Is it really impossible? What if they use some fancy machine to carve every single mark? People often say that a camera's photo can never replace an artist's painting because the former has no spirit to it. The same thing applies here. At a mere glance, I can differentiate carved marks from the results of combat training. Whew, I hope that cleared things up for you. Hey, is this that new brain exercise game that's been super popular with the scholars lately? It's surprisingly fun. Anyway, it's getting late. I should escort Miss Dunyarzad to Nilu's stage. See you later. Party. Back to square one. Is our memory deletion theory also wrong? But You're at not least in a we've reached time. some other conclusions in the... Yep, that's true. So, can we think of any new ideas right now? Strange? Paimon feels like everything's been strange lately. Never thought about leaving. Huh? Leaving the city? You're right! It's really strange how we never thought of such a simple solution! Many things should become clear if we can confirm the flow of time outside of the city. Paimon can't believe it! Did we miss this because we're tunnel visioning too hard on our other theories? Or because we're just too tired? How about we go back and ask Nahida? Maybe we've forgotten something about leaving the city. शिकारी भाई सो गए क्या? लग तो ऐसा ही रहा है कि मैं भी अभी सो गया 2 मिनट पहले सो You're गया. back early today. Did you find something new? Sort of. We're mostly sure now that we're not in a time loop. And we also aren't in the real world. But at the same time, we have a new question. Leaving the city. As far as I remember, you've mentioned your plans to do that twice before. We did? But we don't remember anything. What happened after we talked about those plans? What did we say when we got back? Let me think. I don't think you ever actually told me what the outcome was. Oh, it's probably more accurate to say that both times you never came back the whole night. But you two Genshin sometimes stay out the entire खेलते night anyway, so at the time, I didn't think too much about it. Oh, he It ऐसा. is true that sometimes हाँ we वो तो lose है. track of time during our investigations. Before we know it, it'll already be the next day. But still, तेरे पास neither of us Really? That's kinda strange. In theory, I should have already awakened all your memories. Yep, something here is definitely fishy. Let's go. Beep beep आ गई. Beep 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 beep. Beep beep beep. Our memories are back! Let's go. About that. Well, where should Paimon begin? Traveler, aside from your memories that were just restored, I have another message for you. Listen to it and you'll understand. Can't go back. There are countless spaces here. Our Sub-Zeru's festival in Sumeru City is just one of them. And go back. Countless space. Traveler, you should be missing 2 days worth of memories. Yeah? Paimon will fill you in. 2 days ago. It's time to carry out our plan from yesterday. Contract. Okay, let's go. Dr. Nahida. We don't have many more. Back to the. Why can't we leave the city? What is the academia up to now? Don't ask me. It's not like I can tell you anything. This is a direct order from the Grand Sage. Just wait until tomorrow. I have a real emergency. My goods have already arrived at Port Ormos. If I don't hurry, they'll be stolen. That's your problem. Make sure you make a request in advance next time. But it's not like you can just predict business matters in advance.
Just like complete. Oh yeah, bhai. It looks like the Academia already announced a lockdown for Sumeru City today. How completely unsurprising. Let's go and question them. Hello, sir. Why can't we leave the city today? Here we go again. Don't ask me. I don't know. We just received an order that no one is allowed to enter or exit Sumeru today. They didn't tell us anything else. Angering me won't get you anywhere. Okay. If I had that kind of insider info, I would have left this stupid post long ago. Baat to sahi. It looks like he really doesn't know. If we can't get anything out of him, let's take matters into our own hands. Why don't we climb over the walls? Those guards can't be everywhere. This is a good spot, and the guard hasn't noticed us at all. Let's hurry! Huh? Why? Are you going to leave Paimon behind? Need someone to stay and. But what if things get really weird out there and you get अभी Genshin ही खेलोगे या कुछ और भी? अभी तो फिलहाल Genshin ही खेल रहा. Paimon knows that Paimon can't do much, but स्टोरी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है मेरे को ये. haven't we? Don't worry, if we live together, it will just be the same. Okay. Promise Paimon that you'll come back as soon as possible. Just a quick look. And please, be careful. Okay. Memories! Let's go and try to leave the city. Paimon would never see you again. Just disappeared. Paimon waited for you for hours and hours at the city wall and you never came back. You promised Paimon that you were only taking a quick look. Paimon, calm down. He's here now. I don't think he understood what you were saying. Paimon doesn't care. Paimon wanted to go look for you, but you also said that Paimon should stay. Paimon was so worried and so scared the entire day. Though I don't remember doing any of this. I won't leave you. Okay. Paimon will forgive That's you. the important thing. The most important thing is that you didn't actually disappear. Oh, Paimon was so scared that you... Okay, Paimon, can you tell us your perspective of what really happened yesterday? Okay. I see. Using two people's different perspectives. After that, you left the city. Paimon kept her eyes on you the whole time, but then you disappeared in an instant. Right now I'm downloading Genshin on my laptop, so I am free because it will take about a lot of time. Yeah, that is correct. Expo. It does take a lot of time to get downloaded. So that's what you saw. You were zoning out. Anything? No way! I'm not watching you with the fullest. What's your perspective, Traveler? Oh, You you sure you don't have any memory of this? I guess that explains everything. You also lost your memories. The last 2 times you tried to leave the city. Those days' memories can't be awoken. So, if we leave the city, our memories will be Have you ever tried any erased? soul games? Yes, bro. If I'm not wrong, soul games are like Sekiro. If I'm not wrong. And I have played Sekiro. I have completed that. Like 2 or 3 times, maybe. So they didn't. It really sounds like something big outside of the city is being... But this way, we'll also never discover what's outside! Memories will be erased. Can we live behind? Something like a Yes, sir. message? How can- But don't look at me like that. I'm not used to being stared at. Well, okay. You want something that Give can me pass some on time and messages, take right? care of the note. Give me some time and take care of Dunyarzad for me. Yep, now we're talking!
Yeah, you're right. Sekiro, Elden Ring, Dark Souls, this all are Souls. Oh yeah. I'm done. Here you go. What? Isn't this just an Akasha terminal? You made some little changes. Akasha terminals are already capable of sending messages. I just tweaked it so that it can connect to any node. To make something like this? Nahida, you really know the Akasha like the back of your hand. Anyway, you can use this now to record a message, right? Yep. I'll help you save the messages. It should be pretty easy to use. I just can't guarantee the user's status and signal coverage when they're outside the city. We'll never know until we try. At least we're taking the initiative now. Let's go then. Let's expose those sages. All right. Paimon isn't as worried about being separated since it happened once yesterday. But Paimon, okay. See you tomorrow, traveler. My friend had completed Sekiro. My friend now completing Dark Souls 3. Yeah, nice. What I left? Yes. Although the signal was choppy and had some interference, we still managed to receive 2 messages from you when you were outside. Okay, now that you understand what's going on, let's hear the messages together. कौन आया बीसी में? हैरी है ये. Can't go back. There are countless spaces here. Our Sub-Zeru's festival in Sumeru City is just one of them. Countless spaces. I've entered another space. Before me are flowing sandstone and howling fish. Impossible and surreal sights. All these spaces are empty except for the occasional ones that contain mute puppets rather than people. I can't sense any human presence. हेलो अरे भाई डीमन हेलो कह रहा है. डीमन समझा ले जा जिट्टी को वेलो खेल ले. अरे तू देख नहीं रहा कितना अच्छा स्टोरी चल रही है. You left the Sumeru city space when you set foot outside of the walls. Lowly character in the. Everything looked completely normal when Paimon was looking out from the inside. That's unbelievable. And if we take your word for it, the other spaces all had very weird contents. Okay. There's another part here. I only received it last night. These spaces have been disappearing one after the other. Absorbed by something like a sun in the sky. Okay. And now, even the final space has also disappeared. Behind me, a lot of spaces just appeared again from thin air. Yeah? I get it now. Those spaces are actually... Why did the message end right there? What did the traveler want to say? What are those? Probably because yesterday just happened to end at that moment. Oh, right. Paimon did hear a beep from the Akasha. Did it come from here or from the message? The message. It should have come from the traveler's Akasha terminal. After the beep, Traveler said even the final space has also disappeared. Traveler, what do you think that final space could have been? The space where we were yesterday. It's space without human presence. The real world? Was that space actually the real world? But wouldn't a real space just randomly disappearing like that be catastrophic? My impression is that each day in this samsara only ends at the sound of that beep from the Akasha. All the bizarre spaces I saw outside the city had one thing in common. Lack of human presence. That doesn't sound right. Oh, so that's what it is! After the sound of the beep, the final space, the Sub-Zero's festival, also disappears, and we're taken to the next day. Later on, Traveler also mentioned a bunch of new spaces materializing behind them. Huh? Do lots of new spaces appear every day? Paimon's head is spinning.
Just, well, consider this. For all the horrors of the Archon War, at its heart, it was just a game where a bunch of gods fought over 7 seats. So no matter how strange or spooky things may look on the surface, maybe all they point to in the end is a small and simple secret. Wow, the Archon War, huh? That's an analogy and a half. Give me some time, I need to organize my... Hey! Where are you? Organize your thoughts on the familiar bench. Harry bhai, Harry bhai. Yes. 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 ये तो कुछ और ही चल रहा है. Do you want some alone time to think? क्या सोचा इसने मुझे तो समझा. Sub-Zeros is about to यहीं begin. पे. I'm going to go watch it. Answer. Okay. Why don't you go ahead, Dunyarzad? Okay then. See you later. Have you figured it out yet, Traveler? Time is ticking. Awesome! What is it? Paimon wants to know. Oh, wait, no. Let's meet up with Nahida first. You can tell us both together. This time we're gonna get... आपका जेंशिन स्मूथ चलता है, मेरा 15-25 FPS पे चलता है. तो सेटिंग चेंज करो ना भाई, ऐसे कैसे चलेगा. स्मूथ के लिए मैंने भी तो पूरी सेटिंग बदल दी. ये देखो ग्राफिक्स सब लो कर दिया. और वी सिंक एक टाइम पे मोशन ब्लर ऑन कर लेना. मोशन ब्लर काफी हेल्प करता है. ये मोशन ब्लर की वजह से मेरे ग्राफिक्स मेरे पीसी पे लोड नहीं आ रहा ये सब करने पे, ऐसे घूमने फिरने पे, क्योंकि कलर्स इसमें ज़्यादा है ना, तो इतना ग्रेडियंट कलर उठा नहीं पाता. ये सो गया पिस्टल राउंड में. जजुटी मोशन ब्लर काफ़ी हेल्प करता है. जजुटी एस कर दिया. ओह ये एस कर दिया. Thanks, You're Dada. back. I've been waiting forever for you to. Judging by the looks on your face, are you ready to take your Sub-Zero's exam and graduate from the festival? है woman है वहाँ पर. Okay. First off, have you discovered the hidden truth? Okay. We've already experienced the Sub-Zero's festival many times. The day of the festival seems to be in the perpetual samsara. Okay, Nahida said the Akasha relies on the power... All the bizarre spaces I saw outside the city had one thing in common. एक मिनट ये गायब हो गया. Those spaces remind me of... राजन बोल रहा है अरे भाई. Like the one I had in the Avidia Forest. Except these have no sign of human presence. The moon, illusions, and... People in Sumeru don't dream. That doesn't sound right. I need the to truth behind dreams. We are all in a dream. It isn't that the people of Sumeru don't dream. Rather, the Akasha is taking their dreams from them. People in Sumeru think they don't dream, but the truth is the Akasha steals their dreams without them knowing it. And those spaces with no human presence are stolen dreams without their host. That would explain why they sounded so weird when he was trying to describe them. Huh. So people in Sumeru do dream after all. In fact, we're all in one big dream together right now. Correct answer. Now,
how did you conclude that the Akasha is capable of this? Okay. The Akasha relies on the power of a gnosis to operate. The Akasha is the manifestation of the god of wisdom's power. It compiles the wisdom of the entire populace. And it grants the people to knowledge. Yeah. It compiles the wisdom of the entire populace. That doesn't sound right. And it grants knowledge to the That doesn't sound right. तो फिर क्या ये? It is the manifestation of the... Oh, okay. Those dream-controlling creatures in the forest also get their power from the Dendro Archon, right? That would explain why the Akasha has the ability to control people's dreams. Is stealing everyone's dreams really how the Akasha compiles their wisdom? Isn't there anything more to it than that? Dreams are fantastical, complex, and full of imagination. People's brains are the most active when they're dreaming. In other words, dreams are rich bundles of human wisdom. Yeah? So in other words, the complete opposite of how Hypatia understood it. Paimon remembers her saying that the sages think dreams are foolish delusions, and the fact that no one dreams is a blessing from Greater Lord Rukkhadevata. The real story is that the sages from the Academia are using the Akasha to steal people's dreams for their own use, huh? Yes, and they don't intend to stop it. By the sounds of it, you understand the current situation pretty well. Then what about the samsara? What about the samsara? Okay, यहाँ मैं आके फिर अटक गया भैंस की टाइम. The Akasha. The beep is a prompt tone for Akasha operations. We still hear it. यहीं पे गया को. Those ओमन spaces को दे दे kept अल्ट मार के disappearing उधर चला before जाए my eyes. But as soon as that beep sounded, many more spaces materialized. The appearance of the Those dreamscapes kept vanishing. As But as soon soon as- as that beep sounded, more new... आ गई neon. Nice. Correct. The Akasha is keeping each person's brain in a constant dream state, but also separating their consciousness from their own dream. Their disembodied consciousness is placed inside the collective dream of the Sub-Zero's festival along with everyone else's, while their now vacant dreams are harvested by the Akasha. No one is any the wiser as another day passes in the dream, and so begins another samsara cycle. People wake up to yet another Nice. dream about the Sub-Zero's festival. The dreams that belong to them are once again harvested by the Akasha. And so it continues. So, this is like a dream factory. And the भाई Akasha is ओमन ने भी ऐस किया मैंने भी ऐस किया आओ Did Paimon get that analogy right? डायरेक्ट ये ऐस कर Very लोगे good, Paimon. ए भाई Using analogies well is an excellent habit to get into. नीरो भाई कहाँ है? नीरो भाई की बत्ती चली गई. Beep we keep hearing is नीरो भाई actually from की our real बत्ती life बुझ गई Akasha terminals. Real life Akasha Taking terminal. off our terminals in this dream doesn't do anything. Okay. All right, last question. Who am I? The moon. They say that alchemical divination is the Dendro Archon's divine revelation. So then if So Nahida has if referred Nahida to has herself. referred to herself as the moon. Now that I think about it, wasn't illusions a hint that we're all dreaming? Now that I think about it, wasn't illusions hinting at the sage's deception of Sumeru's people? 40 है ये तो मेरे पल्ले के बाद. So you noticed. You are lesser Lord Kusunali. I thought that one would be the hardest question. That's why I put it last. That wasn't hard at all. Even Paimon guessed that. नीरो भाई के बीच वाली बत्ती गई थी. घर की Now बत्ती. that you mention it, Nahida, घर की. you've been hinting to us since the very beginning. It's funny. Thinking back to when we were asking all over the place for info about Lesser Lord Kusanali. Paimon didn't expect to meet you like this. Yes, those can wait until we're back in real life. On the other hand, I'd be happy to answer any more questions you have about here and now.
Why couldn't you simply tell us the truth? You asked me this question before. My answer was, it would literally blow. Now that you know this is all a dream, this answer should hopefully make more sense. Have you heard the saying, don't wake a sleepwalker? Likewise, if someone suddenly had told you all this instead of you learning it on your own, your notion of reality and dream would be thrown into irreversible confusion. I couldn't expose you to that kind of risk. That's why I could only give you very subtle hints and some suggestions. Long story short, I'm really sorry I had to keep you guessing. Okay. How do the sages manage to keep the people from noticing? Firstly, this dream we're in is completely based on reality. People have already experienced this Sub-Zero's festival, so it would be very difficult for them to find anything that strikes them as surreal. Secondly, you're probably wondering why people don't have any memories from earlier samsara, right? That's because people don't remember their dreams most of the time anyway. And in any case, their actual dreams are being taken away from them by the Akasha. So whenever they wake up in this dream of the Sub-Zero's festival, they don't remember anything from their previous identical dream. That reminds Paimon. Traveler had a dream when we were in the Avidia forest, but couldn't see what it was about after waking up. Is that an example of what you mean? Yes. Only after receiving the blessing of Dendro can a person gain the Dendro element's dream-enhancing power. That explains the feelings of déjà vu. Meanwhile, everyone else has no idea that they are in the Sub-Zero's festival samsara, while their dreams are stolen from them over and over again. Okay. कुछ पढ़ लेनी पड़ा. Can humans really keep dreaming forever like this? We might say your mental fatigue has already answered this question. Eventually, there's only so much, especially those whose health is compromised to begin with. Like Dunyarzad. This relentless exploitation takes an even... People's lives are at stake here! Nobody knows a thing. Why is the festival dream about... Why is the dream about the sub... I know, right? Why did they have to base this dream on my birthday? Could they really... Even you don't know the reason? What the Academia sages are determined to harvest lots of dreams in a short time, no matter the cost. They have to be up to no good. Unfortunately, Traveler, do you have any information? Those spaces remind me of dreams. Like मेरा आईडी सर्च करो एक बार. It's not good, but those spaces remind me of अपने आप ओपन हो गया, मैंने ओपन नहीं किया था. एक मिनट The रुको. Grand Sage said, "Go celebrate the birth of that god to your heart's content." Did he mean something more? Yes. यही बात है. Celebrate the birth of that god? Could it mean? 101 woman. Nice. Deceiving the people of Sumeru with no regard for their safety. No matter what they're trying to do. That after we end the Sub-Zero's festival samsara, we have to look at... How can the sages of the Academia do this behind their Archon's back? In the end, I'm just the moon. Real sun is Real long sun gone. is long gone. A sun and a moon? You're just talking reals again. Nahida's talking Your in real riddles again. sun and moon. बाकी यार. Oh, we're out of time today. I'll tell you how to break free of the samsara tomorrow. Okay. अगला दिन. Good morning, Nahida. Wait, now that Paimon remembers everything, should we instead say good morning, Lesser Lord Kusanali? Hey, what's wrong, Nahida? Don't look too good. You don't look too good. I'm afraid that what you're thinking right now is correct. Did Dunyarzad already disappear? No. The real Dunyarzad's consciousness has indeed disappeared. It can no longer endure the constant dream harvesting. Paimon can't believe it. लेके चल, ले चल. So what about that other Dunyarzad? What is... What is she? She's actually something like a puppet, but not completely. The real Dunyarzad's consciousness could no longer keep playing her role in this dream.
So another Dunyarzad appeared to replace her in the dream. Just like the grass and the trees, that Dunyarzad is just a building block of the dream that helps to keep it going. But personality-wise, she's nothing like the real Dunyar. Puppets are stiff and can't copy a living person's vitality. They're After just, all, they're just there as filler. You know, speaking तो of मेरी भी which, देख लो आईडी. the old Dunyarzad might not have been too different from a puppet. Dunyarzad truly believed that she met you within her consciousness, and it was you who inspired her. So you do remember her after all. Yes. Back then, her family was overly protective of her. No one cared about her personality or thoughts. It was as if she only lived to stall her Elazar. I just gave her a little wisdom so she could look at life in a new way. So that she could be her own person. But even so, she still... Far from it. I'm still a long way off from being a real Archon. I couldn't even save her. If I were a competent Archon, I wouldn't have let my most faithful follower die at the Sub-Zerus festival with so many regrets. Pratik Kumar, hello bro, welcome to the stream. Nahida, it's the sage's fault, and अरे there's a यार सब law. मर गए. I'm not beating myself up. All I did was to rationally observe the distance between myself. Don't be like that, Nahida. Even real Archons are still allowed to be sad. To prevent more tragedies like this, we must end the samsara. Great, but The dream is under the bowl. Only Humans can dream. Even the Akasha is unable to create them. That means this dream belongs to a host who created it. भी डायरेक्ट एंट्री लेते हैं. How should we find that person? Well, if this is someone's dream, then everything here must come from deep within their consciousness. Which means, with the power of imagination, they can change anything in this dream. Imagination? What do you mean by Imagination means breaking through what you perceive as normal. Like when a server at a tavern brings a plate to you, you'd naturally assume that food is on it. However, if you're the dream's host and you become aware that you're dreaming, when you imagine gold and more on the plate, the dream will respond देख in लूंगा kind, राजन, देख लो. and the server really will bring you gold and more. स्टोरी कितनी कंप्लीट But right कर ली now, है आपने? our host is unaware ये that स्टोरी तो this is चल रही है नहीडा की. No matter how many तो times मेरे को they're आर्कन served, की. it will always be food. Find some way to make that person realize that they're dreaming. Usually once that once happens, that the person happens, will wake up the and the person will wake Oh, up and the backside, dream backside. samsara. How are we going to find them, though? If it could be anyone, it'd be like looking for a needle in a haystack. हाँ यार. And even if we did find them, how are we supposed to make them realize they're dreaming? After all, like you said, don't wake a sleepwalker. It's extremely difficult, yes. But the only ones who can do it are you two. Remember, everything you've achieved up to this point has all been for the sake of finding the host and ending the samsara. राजन की तो चैट पढ़ लो भाई. राजन की पढ़ी है ना, पढ़ी ना मैंने चैट. देखोगे क्या मेरी आईडी बाद में बताओ. Out of town? तो मैं बोला तो बताऊंगा ना. Full of dreams where the traveler went? Orustan, are you going to play? Yes. I want to try something. There must still be a small wish. Naringo. Dreams are supposed to be fantastical, romantic, and full of pleasant surprises. Unnecessary things like this. Paimon's still a little upset that we've come this far only for Dunyarzad. She was such a good person, with such a simple wish. But fate was against. Yeah. Saving Dunyarzad is what kept us going, but we mustn't lose hope, Traveler. Dunyarzad would definitely want to see us save everyone else. So let's break this and Paimon's wondering. Do you think the sages would get one of their own to be the host of this stream? Feels like it would be easier to control it that way. Knowing the plan, they'd probably become aware that an unsuspecting host would be less likely to try this. Huh. That's true. Plus, the sages probably weren't counting on there being other factors beyond their control.
like Nahida and us. So, who do you think the host of the dream is? The one. Strange that would make sense. Ferris, the Knight of Flowers, is a symbol of the whole Sub-Zero's festival, right? Pretty core character. Let's go ask him some 80 questions. था यार वो, मैं भी 80 था. Okay. तो भाई 30 प्रीमोज मिल गए एंड आई गेस ये वाला चैप्टर होने वाला है एंड जिसमें मुझे मिलेंगे 60 प्रीमो 30 प्रीमोज एंड एक मेमोरी ऑफ फ्लोरिशिंग ग्रीन. यार इस ड्रीम वर्ल्ड चैप्टर के चलते हुए मैं भी 2-3 बार ड्रीम वर्ल्ड में चला गया था. किसी को बताना मत. You're back. You left in a hurry last time. Is everything okay? Everything's fine. Just, it's a little hard to explain. An experiment? That came out of nowhere. I'm listening, though. Could you make a wish? Imagine you. You want me to make a wish? Is that a new Sub-Zero's festival Less questions! More wishing! Okay. My wish. My wish. Okay. I'm a little nervous saying this out loud, but I want Miss Dunyarzad to be happy. Oh. I noticed earlier that she looked a bit down, and she wasn't really talking to anyone. She just doesn't seem like herself. She's always so gentle and kind, and all the kids love her. I've also wondered if the reason she asked me to be Ferris Knight of Flowers is because I'm special to her, or... So, you have a crush on Dunya... Oh, is it that obvious? After what I just said, I guess it is. When she placed the hat of the Knight of Flowers onto my head, she said to me, I want everyone to have a happy sub... What she didn't realize was that I'm not that interested in how everyone else feels. In that moment, I just wanted to be her Knight of Flowers for the rest of my life. 50 years? 100 years? I'll serve her to... Okay, yeah, that was a bit much. Felt like... Okay, I'm ready to make my wish. I would like Miss Dunyarzad to appear in front of me right now with a smile on her face. Here goes. Please come true. I'm gonna open my eyes. Oh! You're... What? Faki? Sorry, but only one portion of Yelda candies per person. Back home you go. Nice try, you two. Anyway, never mind. I don't need to see her appear right in front of me. As long as she's... Guess he isn't the host of this dream after all. Should have expected it wouldn't be this easy. Maybe. It seems like everyone who knows Dunyarzad loves her. But none of them has any idea that she... My lady, step back. That sounds like Dia! Oh, right. This is when Dunyarzad bumps into the kidnappers. Huh? But Dia can handle them. Hey, Traveler! Return to the accommodation. चादर मोड़ने का टाइम आ गया लगता है. Oh, it's you. Great timing. Please take... Hey, this is my job. The Homiyanis pay me, not you. You... Fine, all right. Knock yourself out. Why are you so worked up anyway? It's not like I don't trust your fighting skill. Anyway, watch yourself. So you got yourself some backup. Suit yourself. भाई रहने दो, मत खेलो. New punching bag. Come on, you coward. Law of the jungle. Silence. I'll be back. You won this one.
that ended my shop. Shower new praise. I'll be back. Electrocharge. Traveler, were you just taking your anger out on those guys? You and Nahida both. Dunyarzad wouldn't want to see you two like this. Oh, and speaking of her, Paimon just remembered something. Remember how during the first Sub-Zero's festival, before the Samsara Came started, here with Dunyarzad because she here wanted with to pick some. Dunyarzad. She said it was because she had forgotten something. Okay, so Paimon's memory is working so far. Anyway, Paimon also remembers that she is staying somewhere around here. She pointed it out to us the night before the Sub-Zero's fest. Yeah, even if it's Maybe only ये a Dunyarzad time का ही clue, हो. it'll probably still help us more than this needle in a haystack, sir. क्योंकि mostly वही तो सब कर रही थी ना. This is the place. Festival के लिए. It's rude to enter other people's spaces without permission, but desperate times call for desperate measures. अबे 80 है वो. Hey, the windows are unlocked. भाई अपना स्मोकर एंट्री पे स्मोक करना भाई. Paimon's gonna take a peek inside. This was only a temporary residence, so there was pretty much nothing inside except this book on the table. Should we open it? Wow. Dunyarzad wrote all of this. Sounds like she was always thinking of us even while we were away. Even though she was also busy preparing for the Sub-Zero's festival and had all her health problems to work. She must have wanted to give this to us as a gift on the day of the Sub-Zero's festival, right? If we hadn't found this book, we never would have known. But now that we know, we can't even think. Nice. Hey, where are you off to now? Maybe ये दुनियादार का ही ड्रीम है. It's Dunyarzad's puppet. Traveler? You must be exhausted. Come to think of it, we've been stuck in this place for a really, really long time. Even the last. Even the last time we were chatting happily with Dunyarzad feels like an eternity ago. Nice. Paimon still remembers when we were sitting here, and the way her eyes sparkled when she talked about Nilu's Dance of Sub-Zeros. There will always be frustrations in life, but I know that the point of living is not to leave behind any regrets. That was what the real Dunyarzad said, wasn't it? Does that mean... Yes, Traveler. What is it? Oh, so she's still just a puppet. But just now, how come... What? Where are we going this time?
मैं तो नाच देख के जाएगा, नीलू को नचा के मतलब नचाएंगे। तू नाच नीलू नाच, उन कुत्तों के सामने भी नाच। If you continue to resist, the Grand Sage is a... Oh. Traveler? You don't have to get involved. Traveler? Traveler? What the heck are you doing? If you get arrested by the Academia, that's another day gone to... Wait, they're not reacting. Have they been scared stiff? Oh, of course! If this is the Sage's plan, they wouldn't put themselves through this. So they're just substitutes. What is this? What happened to the Grand Sage and his entourage? Like I said, they symbolize the goddess of flowers. After all, it's just a shame that all the real Padisaras went extinct after her death. Yes. The Greater Lord brought forth new Padisaras in memory of the goddess of flowers. But she ultimately could never truly replicate that beautiful shade of purple. Beautiful shade of purple. That beautiful shade of purple. Aren't these flowers real भाई ये डोर Padisaras? बंद करो आके Just यार। like the ones from the legend? I didn't even notice. Tanyarzad, did you find these? But didn't you just say all the real flowers went extinct after the goddess of flowers passed away? Yeah. What's going on here? Huh? Imagine that the Grand Sage and his entourage are not here. You guys are acting weird. Hey! So Neelu. It disappeared! So Nilu's the host. What a surprise! Purple Padisaras don't exist in the real world anymore. But in Nilu's subconscious, they can appear as decorations on this. It's just like the example Nahida told us. People assume there will be food on a plate, and Nilu assumed there would be real Padisaras in the flower pot. So when you saw the flowers, you instantly knew it was Nilu. But if we want to end the samsara, we need the host to become aware that they're dreaming. How should we make Nilu realize that? Am I dreaming? Huh? How did you come to that? So I'm right. Lord Is this Lesser Lord Kusanali responding to our celebration of the Sub-Zero? Wrong guess, but you aren't completely wrong either. The point is, what made you think this is a dream? As far as you know, people in Sumeru don't dream, right? Yeah, but have you heard the tale of the first sage? Prevent To prevent a calamity, he calamity, went on he journey went to on a find a journey to dendro. find the Dendro Archon. Ooh, sounds familiar. Dunyarzad told us a story like that when we first arrived in Sumeru City. Yep, but in the part you heard, he hadn't become the first sage yet. There's more. His piety and wisdom were acknowledged by the Dendro Archon, and she finally gave her blessing to him. All kinds of spectacular scenes appeared in front of the first sage, as if all the knowledge in the world was being painted onto a canvas right before him. He was captivated. After who knows how long, he mastered all the knowledge he could comprehend. Afterward, he said to the Dendro Archon, "I miss my parents, my wife, and my children. I've been away from home for far too long. They must be worried." The Dendro Archon smiled. The next second, the sage found himself lying in his bed, as if he had just woken up from a dream. His wife lying next to him said, "You're off to search for the Dendro Archon today, aren't you? Have a safe journey, my love." In the end, the first sage took care of many disasters in Sumeru City and founded the Academia. So, the first sage was dreaming ever since the beginning of the story? He never went on his... Yes.
But his faith and determination were conveyed to the Dendro Archon, so she blessed him in the form of a dream. Paimon understands where you're coming from now. Now that Nilu is That's aware a of it. really interesting connection. I see. Well, it just so happens that today's Sub-Zero's festival is almost over too. Since we're in a dream, let's make this final dance of Sub-Zero's as beautiful as we can. ओ मजा आएगा बिल्ला मजा आएगा. What is your highest view count? Like on the live stream? The wait is over, everyone. I dedicate this to our god, the dance of Sub-Zero's. I don't remember properly. Maybe I guess 10, 14 event. And like raid भी हुई है तो गए यार 1000 तक I guess 500,000 तक गए. I'd be lying if I said I had no regrets. I would have loved to see Nilu's dance. एनिमे देखते हो? यस. जस्ट अभी जुजुत्सु का सीजन 2 वाला लेटेस्ट एपिसोड देखा है, मजा आ गया. माहितो और इतदोरी की फाइट. Have you watched Your Name? Your Name. मैंने डाउनलोड करके रखी है अब तक पीसी में, लेकिन मैंने देखी नहीं. Good morning, traveler. Oh, भूल जाता हूँ बार बार. feels like she's been asleep for the longest कभी कभी टाइम भी नहीं मिलता. Paimon's head feels super heavy. Paimon thinks it was the Sub-Zero's festival. Have we finally escaped from the Sub-Zero? Quick, take off your Akasha terminal. दुनिया साठ, क्या तुम जिंदा हो? मैंने वॉइस देखा है. आई गेस यही था ना मूवी का नेम. वॉइस मैंने देखी, बट मेरे पल्ले नहीं पड़ी. बहुत मतलब टाइम में ले तो योर नेम देखो. इट इज रियली गुड. यस यस श्योर. Thank you, Dunyarzad, for organizing the Sub-Zero's festival for me. I'm sorry, who are... Dunyarzad! You're okay! Oh, a traveler, Paimon. I have something, I just had a dream. I saw Nilu performing the dance of... Oh yeah! Finally my quest completed. 2000 साल के बाद 2000 साल लग गए मुझे इस क्वेस्ट को कंप्लीट करने में. You're actually Nahida, aren't you? Paimon felt like Catherine was acting weird when we met at the Sub-Zero's festival. And Dunyarzad, did you save her? It's a really long story. We shouldn't disturb her. Her consciousness is still weakened. Let's chat somewhere ये else. नहीं जा. ओ भाई. How about by the traveler's favorite bench? नहीं जा, रूप बदल के घूम रही है.
कैथरीन बन के घूम रही है। Yes, neither can transfer anything. Oh yeah. एक विश और मिल गई। इसकी माँ का ऊपर कहाँ चली गई? आर्कोन क्वेस्ट खत्म हो गई क्या? What the fuck? है तो बुक में से सबको कुछ चल रहा है। What the fuck? माँ की आंखें। Never mind. Oh yes, मेरा ट्रैवलर हो गया C2. The lotus lamp's duration is increased. Being too popular can be such a hassle. Who knew the people would adore me so much? You बोल रहा है ऐसा? ये कुछ तो चमका यहाँ पे। क्या है? क्या है? Sweet flower. Give me that. What you want to give? Are you giving the pum 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 pum? Like 780 primos हो गए with like 7 wishes मेरे पास है ना पिक कर। लोगन के लिए कलेक्ट करनी है मुझे ढेर सारी विशेस। पीछे आ जा। सी है सी। देन नहीडा भी चाहिए मुझे। सी। अबे सी कोई नहीं है क्या? I will watch stream on laptop and play Genshin on mobile. Oh ये हुई ना बात। यार मुझे भूख लगी है, मैंने खाना नहीं खाया। Let's talk about Dunyarzad first. After we parted on the last day of the Sub-Zero's festival, Left the city and saw what the traveler had. Among the countless dreams, I found I am one also that was growing F2P. It fainter is and really fainter. hard. It is my friend. Proved my It suspicion. is really hard. झूठ बोल रहा है, कुछ Once हार्ड नहीं है। Dunyarzad could no सब longer bear the बहाने हैं। Akasha harvesting her dreams, बहुत नींद आती है, मैं सही बता रहा हूँ। मैं अभी तक 3-4 बार सो चुका हूँ अभी की स्ट्रीम में ही। consciousness can't last for very long नहीं, though. सच बोल It will रहे। return to its original dream. तभी मैं बीच बीच में बोलता हूँ कि भाई मेरे को स्टोरी पे थोड़ा फोकस करने दो। क्या रहता है, मैं भूल जाता हूँ क्या मिस कर दिया मैंने। I used all the power I मिस had नहीं to कर keep दिया her dying dream मैंने। alive तेरे as को long as नींद आती possible. है, सोता But रहता है it पूरे still गेम wouldn't have में। lasted for much longer. So it looks like we did manage to save तो Dunyarzad in जो the बोल end. रहे Not न्यूरो a moment too गेमिंग soon. कहाँ है न्यूरो गेमिंग? Huh? Why are you two smiling so happily? That's I cute. thought you'd be so moved that you'd start crying. One more time of giving humans emotion. Fine. Everyone reacts differently. All right. You two must have a lot of other questions for me, right? After all, You save my faithful believer. As your reward, I'll answer any and all your any questions. and all questions. About what I saw in that dream at the end of Vidya In Fall. the forest, there was this incense that made the traveler fall unconscious and dream of a huge... You also heard someone's voice, right? It said world and forget me. Yeah, so you do know. We've been We've been waiting. wanting to ask you what that was about, and if the red sky was related to Conria. It seems like the traveler established a connection to Irminsul. That was a message left by the left Greater by Lord. Greater Lord Rukadevata's residual consciousness in Irminsul. Perhaps her last memory before she died. As you two probably know, Greater Lord Rukadevata disappeared after the disaster in Conria. The timings of these events do line up, so your suspicions are reasonable. A message from Greater Lord Rukadevata? We thought it was from King Deshret. King Deshret? That god who died even longer ago? I know Present-day desert overconfidence. dwellers still worship him. You probably just heard some of their conspiracy. Okay, so what does the message mean? I still haven't managed to decipher it. Even the Akasha isn't currently capable of doing that. Greater Lord Rukadevata's residual consciousness in Irminsul seems to be contaminated with something that has a very dangerous aura to it. Many devoted scholars go mad as soon as they connect their consciousness. I've warned the Academia about this many times, but people still keep falling victim to it. But I believe this is the key to What saving is Irminsul. your AR bro? Minus 26.
Well, I recently got to 54 year right now. Was Irminsul? Oh, Tainari also said that Irminsul is sick. And a clutch. Is it because of the contaminated consciousness? But even if you can't figure out what that vision was all about, it seems like our search for you was all in vain. The traveler wasn't affected after coming in contact with that consciousness. I've never seen anyone like that. With you here, we may have a chance at deciphering it. No, we must decipher its secrets. I've already eliminated all other factors that might affect Irminsul. This is the only one left. This puzzle has life and death at stake. It could determine Irminsul's fate, as well as Tevat's. To be accurate, I'm using the Akasha as a medium to occupy Catherine's consciousness. How did you do that? Poor Catherine. Theoretically, I can enter anyone's mind as long as they're wearing their Akasha terminal. The Akasha is the legacy of Greater Lord Rukkhadevata. As Lesser Lord Kusanali and the first Akasha terminal, my consciousness has always been linked to the Akasha. I've always respected my people's free will, so I've never actually occupied their consciousness. When necessary, I just borrow this bionic Snezhnayan puppet. Hold on. Did we just learn some deep, dark secret? So Catherine is... No wonder Paimon felt something was off about her. What about your own body? Why do you need to borrow other people's? Don't you live in the sanctuary of Surasthana? That story begins a long time ago. After Greater Lord Rukkhadevata disappeared, the sages found my newly born self and took me back to Sumeru. At that time, I was young and weak. The sages kept me in the sanctuary of Surasthana, ostensibly for the sake of protecting me. But I've hardly heard from them since. However, I do understand that they had hoped to find Greater Lord Rukkhadevata instead of me, a symbol of her passing. So, the sages basically put their new Archon under house arrest? How dare they! Why don't you teach them a lesson? In some ways... Greater Lord Rukkhadevata was Greater Lord Rukkhadevata was omniscient and omnipotent. Even after her death, the Akasha is still empowering this nation. And I'm still really far away from being able to call भाई myself आपको the friend God of request wisdom. भेजी है. Oh yes. Moreover, the academia is also more proficient at governing this country. My existence has little My meaning. existence has little meaning. रुको मैं accept करता हूँ. ये जरा होने दो story. Festival. Everyone who showed up truly loves you. Thank you for the kind words. But I honestly don't need physical freedom as long as I can connect my consciousness to the Akasha. Trying to find a way to save Irminsul is my Catherine life's mission एक and top robot है priority. स्नेजनाया से. I will work on that. अकाउंट But try to रिव्यू live up to being a कर deity लिया in क्या? the अकाउंट रिव्यू के लिए भेजा किधर था भाई? Every किसी ने once in अकाउंट a भेजा था while, क्या? I will also take up the duties Don't of the think God you of कर मेरा wisdom अकाउंट and जट्टी. enlighten a lost soul तो here. तेरा ही अकाउंट कितनी बार रिव्यू करूँ? Doing all that should be enough. तेरा अकाउंट रिव्यू कर. अब तो There's never सीरीज been any big problems with the academia's governance of Sumeru. This is the first time I wonder what caused them to go down this path, and what they hope to achieve even though the city's residents haven't noticed anything strange. If the traveler hadn't broken the Sub-Zero samsara, the situation... I tried to do some investigating in the Akasha, but I couldn't find anything suspicious. And all Can the you people review mine? interested Sure. seemed to purposely मेरा avoid तो कर wearing लो the भाई. Akasha अरे terminals. राजन भाई. I think they're deliberately trying to hide something. Oh, that reminds Paimon. In Gandharvaville, there was a sage who had invited Tainari to join राजन some kind भाई of क्या करवाने पे लगे हो भाई I तुम? need to first investigate the sage's motives, make things right, and punish them if needed. You mean how the Akasha stops you from having dreams? Yeah, it's been such a long No one time. noticed something. It's not that no one noticed. It's more like no one cared. अबे वो बी चलेगा Ultimately, क्या? it's all rooted in the sage's misdirection. Misdirection? The sages convinced everyone to believe that being unable to dream is a sign of rationality and wisdom. अकाउंट अरे रुको भाई मेरे को स्टोरी तो खत्म कर लेने दो. इसमें से निकलूंगा तब तो मैं कुछ कर पाऊंगा. By the Akasha. With their propaganda in place,
The sages can maximize their use of the Akasha to facilitate their research. Besides, Greater Lord Rukkhadevata must have created the Akasha in the hopes that it could be used to its full potential. That's why I've never come out strongly against this. Anyway, the perspective advocated by the sages drowned out any voices of doubt. हैरी को कह रहा हूँ, हैरी Never use Akasha terminals, find it too got it. राजन कह रहा है To be honest, अकाउंट रिव्यू maintaining Dunyarzad's fading dream क्या took कह a रहा है? lot of mental energy. अकाउंट रिव्यू करने कह रहा है I think I may need to rest for a भाई while. कर दे भाई अकाउंट रिव्यू। अकाउंट रिव्यू के लिए देखो मैं तुम्हें बताता हूँ 45 AR तक तुम्हारा अकाउंट रिव्यू मेरे को करके कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम 45 लेवल तक तुमको सिर्फ प्लेयर लेवल अप करना है, उसके टैलेंट्स लेवल अप करने हैं, और उसको कोई भी इद्दी पिद्दी एरे गहरे 3 स्टार 4 स्टार आर्टिफैक्ट चिपका के अच्छे से बस चलाना है। बाकी तुम्हें सिर्फ एलिमेंटल रिएक्शंस पे फाइट करनी है, तुम्हारी टीम वैसी बननी चाहिए। और मुझे जहाँ तक लगता है लोग अपनी टीम्स नहीं डालते और उसके प्लेयर इन्फो में, बल्कि वो उनको जो प्लेयर्स अच्छे रहते हैं वो मिले रहते हैं वो वाले डालते हैं। मैं उसमें क्या रिव्यू करके बताऊँ तुम्हें। You know you can't wake up a sleepwalker. We happen to. I see. Huh. I should visit my maintenance personnel. तीस हो गया है, क्या बात है। Oh, I'm. जल्दी 104 से Chimeru City. But ever since we last said goodbye to Lesser Lord. हल्ड मार दे। स्टोरी क्वेस्ट इग्नारी का अनलॉक हुआ, स्टोरी क्वेस्ट नीलू का भी अनलॉक हुआ। पोकेमॉन Ops of 30 recruitment point। मत जा यहीं रुक साइफर। रुक गया। Dreams, emptiness, deceptions। Archon Quest Chapter 3 Act 3। भाई भाग गया हो तो। अरे गोपो सी भाग गया भाई लड़कर। Tea parties are a must for. ओए तेरी टी पार्टी। Well mannered. If you'd like to learn the proper etiquette, I'd be happy to teach you. यही बता रहा था ना मिशन करने के लिए, कॉप्सेस वाला। Unlock a new gameplay mode of the function corpses of 30 recruitment। ओके चलो मैं देख लेता हूँ तुम्हारे अकाउंट। अंदर है। फ्रेंड रिक्वेस्ट भी एक्सेप्ट कर लेता हूँ। ये गई एक्सपो की फ्रेंड रिक्वेस्ट। ये यूकी की होगी नहीं, पता नहीं। एक इन्फॉर्मेशन तो लाइक ओ बाई जीन है इसके पास, कैरेक्टर इन डिटेल्स हिडन है भाई, मैं कुछ नहीं कर सकता। क्या मेरे पास जीन है? इस बंदे के पास जीन है। एंड लाइक अगर देखा जाए तो तुम्हारे पास नहीं मेरी जीन नहीं देखोगे। एम्बर से अच्छा तुम जैंगलिंग मिडल कर लो, मैं तो कहूँगा। हाँ एम्बर को कैसे तुमने अंडर एस्टिमेट किया? एम्बर सबसे ओपी कैरेक्टर है फायरों में। मैं नहीं मानता। मत मान। लाइक तुम्हारी मर्जी है, तुम कर सकते हो, इसमें मैं क्या ही कहूँ। राजन 30 लेवल पे पहुंच गया, लेकिन कैरेक्टर इसमें तूने कुछ नहीं डाले हैं। लिनेट को वो भी कैरेक्टर डिटेल्स हिडन है। लिनेट को मैं देख के क्या करूँगा? 30 लेवल तक तो आई गेस मेरा स्पाइरल अबिस मैंने नहीं कर पाया था मैं भी, बट देखा जाए तो राजन के पास अच्छे कैरेक्टर है यार। युनजिन बिल्ड कर ले, मैं कहूँगा राजन युनजिन बिल्ड कर ले, बफ अच्छा मिलेगा, है कि नहीं यारी? युनजिन बिल्ड करनी चाहिए। इधर बी पे आ गए कि अर्ली स्टेज है तो फिर आगे ले जाके अच्छा कर सकते। एंड ये भाई सबसे फेवरेट आईडी मेरी फ्रेंड की, जिसमें है शोगान। एनर्जी रिचार्ज 280। ये लोग कितना घूम रहे हैं।
अनहाइड कैसे करूँ ये तो मुझे भी नहीं पता, मेरा खुद का हाइड रहता है। And I guess नाइस रहना 80 800 विशेष हो 800 प्रीमोस हो गए हैं विशेष को। So like अभी तो और पढ़ेंगे। 18 डेज है अपने पास ये वाला बैनर हटने के लिए। एंड दिसंबर 8 को गाइस मैं तुम्हें एक बार बता देता हूँ, मैं कम्युनिटी पोस्ट भी अपलोड कर दूंगा, डाल दूंगा, तो देख लेना अगर कोई देखना चाहेगा कि दिसंबर 8 को होगी 4.3 की लाइव स्ट्रीम, जिसमें कोड मिलता है जिसमें से मिलेंगे हमको 300 प्रीमो जेम फ्री फ्री फ्री। ओ भाई फ्री फ्री मुफ्त। मेरे को कॉल करना ना मत बोलना चाहिए। मुझे ही याद दिला दे तो। फिली कम्युनिटी करना है ना। क्या चल रहा है? चल तो बहुत कुछ रहा है, तुम बताओ क्या देखना चाहोगे? लाइक मेरे पे कितने हो गए? 27। हमको भी बता देना। यस मैं बता देना गाइस। फ्यूरिना दिखा दो। फ्यूरिना मेरी बिल्ड नहीं है ब्रो। अरे दिखा यार, मेरी दिखा दो। मेरी भी कौन सी बिल्ड है? मेरी बिल्ड कर ली मैंने। 39 पे 220 नाइट्रो डैमेज बोनस कुछ। वेपन है इसका मेन। आर्टिफैक्ट्स ये दे रखे हैं मैंने। HP and crit damage. नहीं तू समझा नहीं। लो देखो आप तो समझ गया। अब वो दूसरी वाली फ्यूरिना नहीं दिखा सकता। तू चाहता है मेरा चैनल बैन हो? आराम खोर। नहीं हो रहा एक्सपो का। What the fuck man? चलो एक बार अबिश ट्राई कर लेते। क्या करूंगा लेकिन मैं अबिश जाके वो तो कुछ भी नहीं रहा है। यार कहीं और फाइट नहीं होगी क्या? मुझे फाइट करनी है। वेलकम। ये तो बड़ा हो चुका। ले लाइन डिसऑर्डर कर गया। क्या कहते हैं उसे? वही कहते हैं। पता नहीं क्या कहते हैं। ले लाइन कहते हैं, इतना तो मालूम है। फ्यूरिना हटा के मुझे लेना पड़ेगा अपना हेजू। Got a problem you can't solve. Okay.
Let's light it up. Bow your head. अब कहाँ भागे जा रहा है लौंडे? ये आईसो का अपने बंदों के ऊपर भी डीबफ पड़ता है क्या? हाँ। बखूबे। हैरी। हाँ। लिनेट जानता है ना लिनेट? हाँ जानता हूँ। Time for afternoon tea. 4 स्टार लिनेट एनिमो कैरेक्टर। हाँ जानता हूँ। उसको भी अगर एलिमेंटल मास्टरी पे बिल्ड किया तो वो काम करेगी सुक्रोज वगैरह के जैसा? हाँ सारे एनिमो वर्क करते हैं ईएम में। लाइक उसका अल्टीमेट में वो अटैक करती रहती है ना वो टोपी। हाँ। तो वो सुक्रस नहीं है क्या? सुक्रस नहीं है ना मेरे पे। क्यों नहीं है सुक्रस? गलत किया आपने। या फिर वो हेजो क्या काम करे? हेजो कर पाएगा क्या? क्योंकि वो तो ऑन फील्ड डीपीएस है और उसका वो हट जाता है ना बाद में एक शॉट में। हेजो तो वो है क्या कहते हैं, ज्यादा उतना खास नहीं है हेजो। तो मुझे लग नहीं रहा कि ऑन फील्ड पे हेजो काम कर पाएगा एलिमेंटल मास्टर, है ना? सही कह रहा हूँ ना मैं? तो बिल्कुल सही कह रहे हो आप। ऐसे मत मरो। भाई क्या भाई, ये तो पूरा मारे हो। वो जस्ट अभी किया इसलिए। ओके। अच्छा हम आईसो में जब ई दबाते तब ऊपर आता है ना बन के वो डबल टैप वाला? क्या? हाँ जब ई जैसे दबाता है तब आता है, वो भाई एक्टिव सोचा करना मैंने पड़ता मारा, आया क्यों नहीं यार? चीटिंग हुई मेरे साथ तो। सेव कर लो। है। एनर्जी कॉस्ट ज़्यादा है और कुछ नहीं, बाकी तो ये सही है। लाइक 162 एनर्जी इसकी है तो स्टिल गुड। 195 EM वो और जाएगा क्योंकि मैंने अभी अपग्रेड ही कुछ नहीं किया। एंड देन इसकी एनर्जी की भूख मिटाने के लिए हम सैक्रिफिशियल स्वॉर्ड इसको दे सकते हैं, और एल्स हम जा सकते हैं आयरन स्टिंग के साथ जो कि इसका EM और बढ़ा देगा, बट फिर इसका एनर्जी रिचार्ज काफ़ी कम हो जाए। ट्रैवलर के प्लेस में जीन या अरे लिनेट रोटेट कर लगा तो लेता। बताओ। लेकिन इसका बेस डैमेज काफी कम हो गया एंड एलिमेंटल मास्टरी बढ़ गई है 231 पे। और क्या चाहिए? मैं डर रहा हूँ भाई, वहाँ पे लगा हो जाएगी। Stay calm. So through my एक मिनट गाइस, कॉल आया।
प्लांट प्लीज। आई गेस मैं इसका वेपन के साथ कर सकता हूँ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज। वेपन्स में कितनी एलिमेंटल मास्टरी जाती है याओ याओ का देखो जरा। 201 लाइक काफी ज्यादा है। इधर ही जा रहा। हाल फिलहाल के लिए इसको ये ही दे देते हैं। Over here. जहाँ खड़ा था वहाँ वॉल बैंग होता है। Surprise. काफी बड़े हैं याओ 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 के वेपन ना मालूम है मुझे। Over here. Let's light it up. Zip on up. Bro. Out of the way. I'm going in. Silence! एक काम आ गया है गाइस तो मुझे जाना पड़ेगा। झूठ बोल रहा है। नहीं मैं मानता ही नहीं। जाना मत मान। नहीं मानूंगा मैं जो भी हो जाए। लटका दिया भाई एक बार में तो। Let's light it up. Eyes on me. Bow your head. Get out of here. Teamwork is dreamwork. ये क्या है? Everybody stand back. To ashes. तेरी भैंस की टेल। Let's light it up. I'm going in. चल तू निकल। खत्म। ये ले तेरी भैंस।
ये लो भाई, चेक कर लेता। ये वेरी नाइस, दिख रही है। 40 लेवल नोलेट, और ये नोलेट मेन बोलते चड्डी खोलते। स्पेशल बिल्ड कर लो, काफी अच्छी है कैरेक्टर अगर तुम चाहो तो। बेडू के साथ काम कर सकती है। सिंग शुई भी बहुत अच्छा कैरेक्टर है। लिनेट मुझे पता नहीं, जीन है तुम्हारे पास। लाइक वेपन पे सैक स्वॉर्ड, फिजिकल डैमेज बोनस प्रोटोटाइप। अगर तुम ट्रैवलर यूज करते हो तो ये हटा दो, कोई मतलब नहीं है। टेंडर ट्रैवलर बेस्ट है। Pavonius Warbo, very nice. Widsith, very nice. And like prototype Amber for attack percent, not a bad option. बढ़िया। रोटेट करेंगे, अंदर नहीं घुसना कोई। सही है, सही है। मैं बाकी का मैं बाद में बताऊंगा आप लोगों को, मुझे जरा जाना पड़ेगा। बाय, सी यू लेटर गाइस। एलिगेटर मजा है अभी की स्ट्रीम में। रोटेट फिर मैं जरा निकलता, मुझे थोड़ा काम आ गया, जाना पड़ेगा। अगर कोई चैनल पे नया है और उसको मजा आया स्ट्रीम देखने में तो सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब करना मत भूलना, और लाइक कर दो यार। अच्छी लगी स्ट्रीम आज की तो। शाम को होगी माइनक्राफ्ट की स्ट्रीम, अगर प्रॉपरली गेम चला तो। ठीक है, वो हम देख लेंगे स्ट्रीम पे ही। तो बाय बाय, हैव अ गुड डे।